Good morning, everyone, and welcome to a nice Sunday morning. I'll be bringing you all the live action of this first match of the day, Grandiose Cricket Club versus Crazy Cruise. So Surya 7, he's a joker. Surya 7. I hope he doesn't make any joke about the the, the kind of heroics of his bowling, and I'm sure he'll be doing all his job very very seriously. As Vinay Kumar S. and Kevin Peterson. I love this name, Kevin Peterson. Born in South Africa and playing for England. A stylish, lovely all-rounder. I would say lovely batting all-rounder that he was, and now a very very nice and accomplished and established cricket commentator. He is a very, very funny gentleman. Joker Surya 7 running into bolt. Vinay Kumar as wanting to hike the delivery. A small bit of an appeal from the wicket keeper. And gentleman standing next to him is the slip, but nothing else. So it's the Super League round match of this league matches. So yesterday we've seen three great matches at this very venue. And I hope that today also doesn't turn out to be different, with some exciting runs and wickets and fielding, which will be a display, very, very full of delivery, wanting to drive the ball. The non-striker immediately inching to get off the strike and get at the marker's end and create impressions for his team, for Grandiose Cricket Club. At the moment, one for no loss, getting a run off the wide of the very, very first bat. After that, it's been all dried up runs with dots to the name of Joker Surya 7. Again, steaming in the bowl, Vinay Kumar outside off stump, wanting to slash that ball but doesn't get any connection. The ball will go towards the safe gloves of the wicket keeper. I'm sure there'll be many who will be tuning in to this match very very early on, and someone who hasn't joined up. So it's a wake up call. Join in to this live broadcast. It's a brilliant, and it's a very fruitful and a beautiful sun-rayed Sunday morning here at the Vellore cricket ground of Vellore. Wanting to hook that ball was Vinay Kumar, as it was short all right, but the direction wasn't met it in perfection with the bat and the ball. So uh, again a dot with two more balls still remaining in this over, with two wides to his name of Joker Surya 7. Love this kind of name. There's Arjun 45, the Joker Surya 7. So this name really crops up some interesting uh, kind of terminologies to the name, as that appeal again kind of actually went up. Nothing very early on. So it's a 20 overs contest. At the moment, projected score 48. You don't have to look at that, of course, but we are shaping up to be a very, very good contest. Last ball of the first over, a little bit short, but the ball didn't rise up as much as the batsman was expecting. First over done and dusted. Grandiose Cricket Club are two for no loss. दो रन बिना किसी नुकसान के नए ओवर की शुरुआत ग्रैंडियोस क्रिकेट क्लब चाहेंगे कि ये एक अच्छी शुरुआत हो, लेकिन वाइड्स के द्वारा उनकी शुरुआत हो चुकी है.
3 रन जो आ चुके हैं, तीनों वाइड के बदौलत आए हैं ग्रैंडियोस क्रिकेट क्लब के लिए, और बैट से अभी भी कोई रन नहीं आए। विनय कुमार एस ने पूरे 6 के 6 गेंद उन्होंने फेस किया था। जोकर सूर्या 7 के नाम हमने गेंद किया था। अभी शाम आए हैं गेंदबाजी का भार संभालने दूसरी ओर, और वो बॉलिंग कर रहे हैं अभी काविन पीटरसन को। पीटरसन ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं क्योंकि वो वाइड की बदौलत आई थी। फुल टॉस गेंद आउटसाइड ऑप्शन, थोड़ी सी हल्की सी मूवमेंट वहां पे देखने को मिला था। एंड आज क्रेजी क्रूज ने उन्होंने पहले टॉस जीत के गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, और ये निर्णय कितना अच्छा साबित होगा ये तो थोड़ा थोड़ा दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आज सुबह का तो पता चल जाएगा। फिर से बहुत बार ये गेंद और इनविटेशन कर रहे हैं बार बार बैट्समैन को जाके ड्राइव करने के लिए। अच्छी रणनीति है मेरे हिसाब से कि क्योंकि एक स्लिप भी है, आप बॉल को हल्का सा मूवमेंट भी कर रहे हो, अपने आप को थोड़ा सा चांस आप जरूर दे रहे हैं कि थोड़ा सा हल्का सा बाहरी किनारा, वो जो अंदरूनी किनारा होता है वो आपका लगे और आपके लिए एक एक विकेट जल्दी से आ जाए उनको बैकफुट पे लाने के लिए। शाम फिर से ये देखिए फुल टॉस गेंद ड्राइव कर दिया है, हल्का सा पुश कर दिए, पहली रन आएगा बैट से। ये फील्डर वो बॉल को ठीक से पकड़ नहीं पाया, अगर पकड़ के अगर शायद स्टंप पे फेंकते तो शायद ये नजारा कुछ दूसरे होता, लेकिन पहला रन अभी आ चुका है बैट से और स्कोर में इजाफा हो चुका है 5 बिना किसी नुकसान के ग्रैंडियोस क्रिकेट क्लब का, जिनको पहले आमंत्रण किया गया था कि आप आके बल्लेबाजी करें क्रेजी क्रूज के द्वारा, लेकिन बैट में आई है अभी ये ओवर द विकेट शॉर्ट डिलीवरी थी ये काविन पीटरसन को। पहले गेंद उनको, इनका दूसरा गेंद होगा, लेकिन जो पहला बॉल उन्होंने फेस किया था वो वाइड था डाउन द लेग साइड, तो ये पहली बार उन्होंने बैट और बॉल से कनेक्ट किया हुआ है। कोई रन नहीं, कोई फॉल स्टार्ट शायद वहां पे ऑफ साइड में फील्डर शायद का कुछ मूवमेंट हुआ होगा वहां पे। ओवर द विकेट फिर से रूम दे के क्रॉस बैट करके मारने की कोशिश की थी वहां पे काविन पीटरसन ने, लेकिन एक एक टाइम पे आप देखिए लेफ्ट हैंड और ऊपर से वायलेट कलर का हेलमेट, एक ही प्लेयर मेरे मन में आता है। एंड काविन पीटरसन, अगर वो नाम सुनेंगे तो बहुत थ्रिल्ड हो जाएंगे, और उनका नाम है वेस्ट इंडीज का फेमस क्रिकेटर ब्रायन चार्ल्स लारा। ब्रायन लारा की तरह लग रहे हैं ये देखिए, लेकिन अगर बैटिंग स्टांस भी इनकी तरह हो जाए ना तो लाजवाब हो। आखिरी गेंद तक दूसरी ओवर का रूम देके खेलने की कोशिश, वो मिड विकेट की दिशा में खेल चुकी है गेंद, और दूसरे रन के लिए भी आएंगे, शायद थोड़ा सा स्लो हो चुकी है, लेकिन फिर भी 2 रन जरूर मिलेगा और विनय कुमार एस आ जाएंगे स्ट्राइक पे नेक्स्ट गेंद के लिए। 2 ओवर के बाद ग्रैंडियोस क्रिकेट क्लब 7 बिना किसी नुकसान के। Yesterday also there was a player by the name of Murali who picked up a hat trick, but after that his bowling figures got a little destroyed as Joker Surya 7 wanted to run across, but as he was trying to limp, as he was trying to jump, he thought that it was kind of something that he really really needed to repull. And sometimes when you try and bowl that you steam in so fast, and to stop just at the delivery mark it becomes very very tough for you.
I was talking about Murali yesterday. I named him Mutia Muralidharan because the kind of he didn't impart the kind of spin or the kind of bowling action that he had. But Murali yesterday picked up a hat trick, and what a hat trick that was! Fantastic unique as the batsman wanted to probe in front and went off the celebration. But he was 3 for 9 at that moment, and eventually his figures got destroyed at 3 for 99. So not the kind of bowling figure he wanted to have a look. This back-to-back dot deliveries as this ball has been played towards the man at mid-on. But one run actually, it will be a very, very quick single between Kevin Peterson and Vinay Kumar S. And now the left-hander Kevin Peterson will be on strike, who I said sports like former West Indies cricketer and a very gentleman, and also occasionally keeps on doing commentary. Brian Lara of West Indies. I love the backlift of Brian Lara. The kind of backlift he produces to place of those magnificent cricket shots. Full toss down the leg side, wanting to hike it towards fine leg, but eventually he'll get 4 runs nonetheless to his name. And the score will now move on to double figures at 12 for no loss. It clearly shown that he was not being able to control the ball. Probably he was trying to put it as a New Yorker or something, but absolutely no control as of the hips. He just gave the ball a direction, and it went towards the boundary for four. It's mentioned at four wide. I thought it actually got some part of bat or the glove onto it, but it's mentioned as four wide. So 6 runs already off 2 balls. Full toss outside off stump. This is really not good bowling here from Joker Surya 7, and that will go towards the cover boundary for 4 runs. This is an early morning breakfast that you're serving on the table, and why not? He'll pick up the spoon and a fork to clinch it off the plate and get his innings rollicking. And Kevin Brian Lara Patterson will get some with some licking runs as he moves on to 6 of 4. Really, Joker Surya 7 really needs to get control on his line and land short delivery again. This time giving himself some room inside edge as he was trying to play the ball back to the bowler, but inside edge and towards the man at cover. No run. Score remains on 17 for no loss. Joe Surya 7 already. To Kevin Peterson way outside off stump. That will be clearly a wide as that ball has been delivered beyond that line, which chase belongs to the umpire for wides. Some it's so much pretty obvious when you bowl. Yesterday also, I was mentioning there's so many runs being floundered, especially at mid on and mid off. Again, there you can see both the wicket keeper and the sleep. Both actually not being able to control that swing and the kind of uneven bounce that ball got generated. But the man way behind towards third man will keep the ball at bay. It's a little bit of a bulky figure, but he has managed to get the ball at bay and throw it back to the wicket keeper. So over the wicket, he will come from Vinay Kumar S, who has faced 11 balls for 2 runs, with 2 more balls now remaining in this over, as that was a wide. Again, down the leg side, absolutely no control. There was a fielder running in. He has done a brilliant. Oh, this is nice. This is nice footwork. This is nice footwork, not as a batter, but as a fielder that you have done down the leg side, and leg by is being signaled. But he did very well to stop that ball off the foot as he came running in from third man towards fine leg to stop that ball. So very good fielding, gentlemen.
But two leg buys, this has been a very, very expensive over, and 15 runs already been given of 11 balls from Juka Surya. Last ball of the third over, driven that ball, a little bit of an extra bounce, and it will go towards the point. No run, 3 overs done and dusted. It's 22 for no loss for Grandiose Cricket Club. Uh, Full toss ball from Shyam over the wicket. लेकिन वही गेंद आप देखिए फिर से फुल टॉस करने की कोशिश करें अब उससे पहले वाली ओवर जो जोकर सूर्या 7 ने डाली थी, कितने सारे फुल टॉस थे और नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं था गेंद पे। तो वो 15 रन दे चुके थे 12 गेंदों में, और उसमें से काफी कम से कम 3 बॉल्स तो वाइड ही थी। और अभी फिर से ये जो पहला गेंद था तीसरे ओवर का, बिल्कुल फुल टॉस काविन पीटरसन को। इतना ज्यादा अगर आप मौका दोगे क्रिकेटर को, बैट्समैन को स्पेशली, तो ये तो मौका ज्यादा छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे शायद वो फुल टॉस गेंद ठीक इनसाइड एज होके उनकी थाइस पे लगी है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, तो थोड़ा सा नीचे वो गए हैं सारे, इकट्ठा हो रहे हैं उनको थोड़ा सा मदद करने के लिए। पैड्स भी खोल दिया गया है थोड़ा सा उनको ईज आउट करने के लिए। तो एट द मोमेंट ग्रैंडियस क्रिकेट क्लब 22 बिना किसी नुकसान के 3.1 ओवर के बाद। और सब कुछ फिर से तैयार हो चुके हैं। वो तैयार शायद इतने थे नहीं, क्योंकि बिल्कुल क्रॉस होके खेलना चाहते थे और श्याम का वो गेंद जाके टिम्बर को डिस्टर्ब करते हुए, तो पहला झटका मिला है यहाँ पे ग्रैंडियस क्रिकेट क्लब को, क्रेजी व्यूज को मैं बोलूंगा। और ग्रैंडियस क्रिकेट क्लब खो चुके हैं अपना पहला विकेट। केविन ब्रायन लारा पाटरसन, जिनको मैं बोल रहा था, वो वापस पेविलियन चले जाएंगे 6 रन मार के 7 गेंदों में, और ग्रैंडियस क्रिकेट क्लब 22 1 विकेट के नुकसान पे।
क्रेजी क्रूज को मिल चुका है अपना पहला विकेट। श्याम ओवर द विकेट बॉलिंग करते हुए लेफ्ट हैंडर को उनको बोल्ड करा रहे हुए, और केविन पैटरसन निराश होके वापस। और मैं कहूंगा वो शॉट शायद गलत था, क्योंकि पूरा स्टाम्प एक्सपोज करके वो बिल्कुल स्लॉग ओवर्स की तरह वो शॉट खेलने गए थे, बिल्कुल मिस कर गए थे। और ऑफ और मिडिल स्टंप बिल्कुल फ्लैट बैट हो चुके थे। और ये देखिए दूसरी गेंद प्रवीण को, पहले गेंद फुल टॉस डाउन द लेग साइड, और उन्होंने थोड़ा सा फ्लिक करके मारते हुए ऑफ द मार्क हो जाएंगे पहले गेंद में। विनय कुमार आ जाएंगे स्ट्राइक में, जो 2 नाबाद है 13 गेंदों में, और स्कोर पहुंच जाएगा 23 एक विकेट के नुकसान पे। ओके सर। तो केविन पैटरसन द्वारा शायद ये एक अच्छी सोच इतना नहीं है, क्योंकि आपको रन्स बतौरने जरूर है, लेकिन आप इतना ज्यादा स्टाम्प्स को एक्सपोज करके खेलेंगे तो यू मिस आई हिट वाला वो तो फिर साबित गलत नहीं होगा। बिल्कुल ही लाइन से अलग होके खेल रहे थे, और वो बिल्कुल ही जाके उनको टीम वर्क को डिस्टर्ब करते हुए। तो अभी 23 एक विकेट के नुकसान पे, और श्याम फिर से ओवर द विकेट। अभी राइट हैंडर विनय कुमार है इसको, अभी दोनों राइट हैंडर्स आ चुके हैं अभी क्रीज में। ये लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। कल मैं शाम को वही यूपी T20 लीग देख रहा था, जो मेरठ वर्सेस कानपुर का खेला गया था। वहां पे भी लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर का जो कॉम्बिनेशन है, जो लय में वो दोनों खेलते थे, तो वो फील्डिंग पोजीशन बॉलर्स को बहुत अपसेट करते रिदम। जैसे ही वो पार्टनरशिप टूटी, उसके बाद थोड़ा सा उनको वो पारी लड़खड़ाई थी, लेकिन उसके बाद उनको आराम से उन्होंने समेटा, और बाद में मेरठ विजेता हो चुके थे सेकंड एडिशन वो कल यूपी T20 का वर्सेस कानपुर। अभी देखिए हल्को हाथों से अपने रिस्ट से खेला, और बिल्कुल वो जो ऊंचाई थी गेंद में, थोड़ा सा बाउंस था, उसको भाप करके हल्के हाथों से खेला, और कोई रन नहीं। 4 ओवर के बाद ग्रैंडियोस क्रिकेट क्लब 23 एक विकेट के नुकसान के वर्सेस क्रेजी क्रूज। बॉलर नेम। और आप देख रहे हैं मैच नंबर 1 इस आज का दिन का। इसके बाद और 2 मैचेस खेलने वाले हैं, और ये टूर्नामेंट ITS 6 सितंबर 2024। और सारा आप ये आंखों देखा हाल आप एक सकते यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल क्रिकेट कॉम्पिटिशंस और अल्टीमेट क्रिकेट सीरीज के वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे। और मैं ये सारा मैच आपका आंखों देखा हाल आपके कानों तक लाने के लिए विकी विघ्नेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। और उनका क्या होगा, पहले थोड़ा सा झटका दिलाया जाए। सुबह के 8:01 हो चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग 4 ओवर करा चुके हैं। अभी फाइन लेग जिनको थोड़ा सा अप बुलाया गया है, वहाँ पे 1 रन का इजाफा पहले गेंद में विकी विघ्नेश 1 रन कंसीड करते हुए, प्रवीण 2 रन खाते पे, और विनय कुमार एस दूसरे एंड पे ये उन्होंने अपना पार्टनर खो चुका थे अभी, जैसे ही वो केविन पीटरसन के रूप में। आपने आपको 2 नाबाद है अभी 16 गेंदों में। उन्होंने ही वो पहला ओवर फेस किया था, जो उन्होंने पूरा 6 गेंद उन्होंने बिल्कुल रक्षात्मक देख लिया था। ये देखिए एंटेंगल पोजीशन में हो गए थे, इतना कंफर्ट पोजीशन में नहीं था, बॉल थोड़ा सा ऊंचा था, लेकिन इतना भी रूम नहीं था कि बैकफुट पे जाके उसको पुल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ कनेक्शन लगा नहीं। बहुत अनकंफर्टेबल थे वो जब वो शॉट नहीं था, तो थोड़ा सा सीम होके मूवमेंट आई पे अंदर, तो वो गेंद लगी नहीं बैट पे, तो डॉट डिलीवरी फिर से स्कोर वही रहेगा 24 एक विकेट के नुकसान पे ग्रैंडियोस क्रिकेट क्लब का। गुड बॉल, हिंट ऑफ मूवमेंट। ये देखिए पिच करके कैसे निकली वो गेंद, और वहीं पे खड़े खेल गए थे बैट को। स्टंप्स भी एक्सपोज हो चुके, तो यही ओपनर्स की बात है। तो आप लोग जितना हो सके आप लोग लाइन पे खेलिए, क्योंकि वहां पे 1 फुट मूवमेंट करके वो बस बॉल की ट्रेजेक्टरी के साथ अपने आप को भी मूव कर सके। ये देखिए ये बहुत
उठ गया ये थे विकी विघ्नेश के मुंह पे एक हल्का सा हंसी आप देख सकते, स्माइल देख सकते, वो अपने आप को प्रसन्न है कि वो अच्छा है। यहाँ पे एक बैकवर्ड शॉर्ट लेग होता ना, तो उनके लिए अच्छा काम बन जाता है शायद, अगर डाइव लगा चुके थे, अगर लगाने में सक्षम होते। अभी विनय कुमार हैस और प्रवीण के द्वारा दोनों के बीच में, यहाँ पे बीच के बीच में थोड़ा सा एक एक छोटा सा एक चैट है कि क्या क्या कर सकते हैं। बैक फुट पे जाके उसको बाउंड्री। खेला और एक डायरेक्शन पे खेला जहां पे उनको मिलेगी 4 रन मिड विकेट की दिशा में। हल्का सा शॉट, और यही वो कोशिश कर रहे थे दो दो गेंद पहले, और आपने बस इनको थमा दिया कि आइए, आप वो थोड़ा सा खेल के अपने आप को संतुष्टि कीजिए। विकी विघ्नेश, ये शॉट आपने अभी अभी 2 गेंद इतनी अच्छी गेंद किया था, एक फ्रंट फुट पे एक बैक फुट के, लेकिन फिर ये बाउंसर डालने की क्या जरूरत थी। ये थोड़ा सा मेरे समझ से थोड़ा सा परे है, लेकिन विनय कुमार ऐस ने बोला थैंक यू और 4 रन मिल गए थे। वाइट काफी बॉल। गेंद, अच्छा बॉल का, लेकिन इसको रीबॉल करने की जरूरत होगी क्योंकि बहुत ज्यादा डाउन द लेग साइड चली गई थी, और अंपायर को थोड़ा सा एक्सरसाइज कराने में मजबूर, बाएं और दाएं हाथ फैला के 1 रन अतिरिक्त मिलेंगे वाइड के रूप में। मोदी के स्प्लिट स्क्रीन, वो जो राइट वाला स्क्रीन होती है ना स्प्लिट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल आपको एक लाइन दिखाती है कि कैसे उन्होंने वो लाइन को पकड़ के अपने आप को वाइट समेटा। बॉल। हाँ, ये अगर लेफ्ट हैंडर भी होता ना तब भी वाइड होती है। विकी विघ्नेश जानते हैं वो वो बिल्कुल पहले लय में लगते हैं। तो यही फास्ट बॉलर्स का मैंने देखा है कॉम्पिटिशन्स में, 2-3 गेंद अच्छे करते हैं, फिर बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे वो गेंदबाज वो है ही नहीं जिन्होंने वो पहले बॉल की थी। अभी बैक टू बैक वाइड्स विकी विघ्नेश का, लेकिन ओवर। ये आउटसाइड ऑफ स्टंप थोड़ा सा बाउंस हो गई थी, और विनय कुमार एस ने उसको बिना कोई छेड़खानी किए भी ने उनको विकेट कीपर के सेफ दस्तानों में जाने दिया। 5 ओवर के बाद ग्रैंडियस क्रिकेट क्लब 30 1 विकेट के नुकसान पे। ले ले। Jaffer has been अरे asked दिस to वे। get the ball in his hand, and he will concede 1 run of his very first over. He has a slip in company, and as an off spinner, toss up delivery, defended very well off the front foot of Vinay Kumar, as he's on 6 of 22.
The slow has been start has been a good one, I would say, including some good rollicking wides, which has also been presented by him. He'll go down the ground straight as an arrow. There is a fielder coming in, but he'll just have to go and get the ball back in action because the ball has gone straight down the ground Two more. for a lovely boundary that was played fully in control as the ball was tossed up above his eye line. And that there you go, right to the pitch of the delivery, and right where it was being deposited in goal at middle stumped. And again, the next run will be cleansed on the onside as he'll get one run and we'll give the strike to Praveen. Score moves under 36 for 1 with one more ball now remaining in this over. So 6 runs that he has conceded in his very first over. They are going at around a little over 6 runs per over. And a projected score 1-2-3 for Grandiose Cricket Club. Last ball, and Praveen says, "I'll also master up what you have done in the 2 balls Fielder. back and have to wait for the signal whether it's a 4 or it's a 6. It's a 4. Yeah, there you go, the signal. So this over proved to be costly, the Over, very over. first from Jaffa. After 6 6:40. overs, the score for Grandiose Cricket Club is 40 for 1. There is the outside off stump flighted delivery, giving a little bit of room to extend his arms and played that to perfection towards long off for a handsome boundary. There's a cheeky smile on the face on the face of Jaffa, but Grandiose Cricket Club cannot ask that for to be deducted. In fact, that got included. So the more you fly, this batsmen were trying to open their arms and get that in control. A 40 for 1 in 6 overs. And now Kaushik has the ball in his hand and also looks to be a spinner. The wicketkeeper is standing up to the batter. Grandiose Cricket Club, they have made a very good start despite losing a wicket. Kaushik will be bowling into Vinay Kumar as wanting to drive that ball and didn't get the connection. The wicketkeeper will get that ball and will remove the bails at a flash. A very polite question being asked to the third umpire, to the square leg umpire. But there you go. That split screen will again help. The back foot was rightly there in shape and is very, very safe there. Replay will suggest. But I love these names that these teams have. You can see that crazy crews. It sometimes sounds like airlines cabin crew, but then Grandiose Cricket Club, lovely names there. Gentle medium pacer, outside edge. The control was not there, but the ball will control itself to get the force and the velocity behind it to go towards the third man boundary for 4 runs. And Grandiose Cricket Club moves on to 44 for 1 with that boundary not being in so much of control as he was trying to fiddle with that ball. There you go, see so much of gap between bat and bat as he was trying to play Ready, ready, batter. a rollicking free flowing boundary, but instead got an edge, but that edge was very, very deeply played. And so for once to the name of Vinay Kumar as moves on to 15 of 26. The next ball has been played on the leg side over that man at long on, and again now back to back boundaries here. And so he's going up the charts, taking every ball, trying to play every ball as much inside the power play to his liking. And he moves on to 19 of 20 score, 27, and score on to 48 now for 1 in 6.3 overs. It was a very, very nice, lovely pickup shot. He saw that there was no Not one at out. the cow corner. This time the ball has been packed back a little bit uppish as he went very deep in the crease to play that ball on the offside, but doesn't get a connection. Fifth ball of the seventh over from Kaushik. A slower delivery this time. There you can see the rotation of the ball while it was wobbling up towards the batter, and it was ball little much slower than the previous deliveries, not allowing Vinay Kumar as to think otherwise.
Last ball of the seventh over. This time on the leg Not side. out. Oh, almost. The ball almost went back to the Over. stumps. That's why Kaushik fell. That he almost had the மச்சான் wicket. முடியலன்னா தடுத்துருக்கலாம். 7 overs done. Grandiose Cricket Club are 48 for 1. ஃபார்ட்டி எயிட் செவன். வா 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 எதுவும் இல்லை எதுவும் இல்லை போடலாம் போடலாம் பால் டு பால் தான். 7 ओवर के बाद ग्रैंडियस क्रिकेट क्लब 48 एक विकेट के नुकसान पे। जाफर का पहला ओवर बहुत ही महंगा साबित होते हुए 1 ओवर के बाद 10 रन उन्होंने फास्ट कंसीड किया बैटर. था। यहाँ पे 2 बाउंड्री भी चटकाए थे उनके ओवर में डाउन द ग्राउंड, एक स्ट्रेट बाउंड्री, एक लॉन्ग ऑफ के तरफ। दोनों ही खिलाड़ी ने थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन था। विनय कुमार ऐसे ऑफ द ब्लॉक्स हो चुके थे जैसे ही बॉल को उन्होंने ग्लाइड किया मिड विकेट की दिशा में। तो वही प्रवीण बोल रहे कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपको बुलाऊंगा जरूर क्योंकि मुझे दिख रहा है गेंद। जाफर फिर से फ्लाइट की डिलीवरी और उनको स्मैश करके मारा है फिर से मिड विकेट की दिशा में। एक फील्डर जरूर है मौजूद, ऑन द विकेट. तो इसलिए Stay away बहुत from it. जोर से मारने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि उनको पता है कि वहां पे एक खिलाड़ी है मौजूद। तो उन्होंने ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं की, तो सिर्फ 1 रन मिलेगा और 1 रन दूरी ग्रैंडियस क्रिकेट क्लब टीम की अर्धशतक से। फ्लाइट डिलीवरी इस बार थोड़ा सा वेट किया इसको उनके आने के लिए। ये मिसफील्ड हेल्प नहीं करेगी, ये मिसफील्ड हेल्प नहीं करेगी। तो अभी उनको 1 रन मिल जाएगा और ग्रैंडियस क्रिकेट क्लब अब पहुंच जाएंगे 50 रन के टीम स्कोर पे, 1 विकेट के नुकसान पे। 7.3 ओवर्स में ये स्कोर आता हुआ और करंट रन रेट अभी यही मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और स्लो ओवर्स के बाद ना इससे थोड़ा सा ज्यादा अगर चलेंगे तो 160 170 तक भी पहुंच सकते हैं यह स्कोर। ग्रैंडियस क्रिकेट क्लब का फिर से उठा के मारने की कोशिश थोड़ा सा हल्की ऊपर आई, लेकिन गेंद में वो हाइट जरूर थी लेकिन वो पावर नहीं था कि वो क्रॉस कर सके। 1 रन मिलेगा जरूर। इतना जोर से मार भी नहीं रहे थे वो। जब भी वो बॉल टॉसअप हो रही है जाफर से, दोनों ही बैट्समैन खोल के मारने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। 5वां गेंद 8वां ओवर का, फिर से फ्लाइटेड गेंद क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेल रहे हैं टुवर्ड्स काउ कॉर्नर। गेंद जा रही है बहुत तेजी के साथ, गतिविधि हो चुकी है। 3-4 बाउंस के बाद ये चली जाएगी मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ के बीच में। ये पार्टनरशिप देखिए 33 रन 27 गेंदों में, उसमें से 19 रन विनय कुमार एस के बैट से आया। और ये रिप्ले देखिए, ये थोड़ा सा ना हाफ मुरलीधरन के एक्शन में भी लगता है जैसे वो गेंद को फेंकते, जैसे वो फिनिश आप देखिए थोड़ा सा मोटिया मुरलीधरन की तरह भी है। अभी जफरदास के गेंद आप देखेंगे, ये देखिए जहाँ पे वो गेंद खत्म करते थोड़ा सा मुरलीधरन के रिस्ट की तरह भी है जब वो खत्म करते हैं। और ये ओवर भी हो गया खत्म 8 ओवर के बाद। ओवर. ग्रैंडियोस क्रिकेट क्लब 56 एक विकेट 856. के नुकसान पे। வெங்கட் ப்ரோ சேம் bowler sir. சேம் bowler தானே? பெட்டர் ஃபாஸ்டா வரீங்களா? Kaushik has the ball in his hand, wanting to deflect it towards fine leg, but the wide signal immediately, so nothing off the bat. And I believe if there was something off the bat, the ball would have definitely gained some pace to go towards the boundary on the leg side.
but a wide and also a single to add to the O's of Kaushik. So not a good start. Again, with his gentle medium pace. The wicketkeeper is up to the batsman, Vinay Kumar, as we face it. He's on 25 of 33 again with that slog shot, wanted to play it towards long on. Crazy Cruise early in the day, they won the toss and asked Grandiose Cricket Club to go on and bat first to rack up the runs for them to chase later in the day. So 12 overs now remaining in this contest of the first innings. This is slower. This is slower, and slowly also will go up the dreaded finger of the umpire. So second wicket down, and Kaushik will grab his first wicket. Ball please. They're planning to go upstairs, but I don't believe so because it is little slower. He's not going upstairs because he feel that he is a goner. Grandiose Cricket Club are Batter, you know the 59 rule, right? for 2 in DRS 8.2 வெளியே overs. இருந்து சொன்னி நீங்க எடுத்தீங்களா ஓவர் DRS டிக்ளைன் DRS டிக்ளைன் வெளியே இருந்து யாருமே சொல்லக்கூடாது 59 ரெண்டு பேரும் There you'll see the replay. It was very cleverly bowled right on that middle stump, and again was shaping up to play that slog stroke and misses the line completely. And first the umpire nods, and then to clarify everything, slowly lifts up the finger of his left hand, which signaled the end of of the batter. And Praveen will be left stranded on 9. It's a very, very important wicket gone as he was playing on 25. So it's a very important wicket that they have gone. The wicket of Vinay Kumar who gone for 26, and they'll be very, very happy with all the progress that's happening here. 59 for 2 for Grandiose Cricket Club. So Santosh has worked out the middle at the right hand batter to join Praveen will be and a non-striker betting on 9 not out of 8. Just lost the wicket of Vinay Kumar, who played a good knock of 25 before being dismissed. Kaushik now on to him. Oh, almost our almost a cotton ball opportunity in the very two. first ball. A full toss wanting to play a little bit on the leg side, couldn't okay control okay first that ball slower wide one from Kaushik early on and almost chipped it back to Kaushik, who was almost shipping up to catch it, but couldn't get that much in front on time, and almost had back-to-back wickets to his Two more, name. two more. This எனக்கு ball ரெண்டு தானே has been போட்டுருக்கீங்க away to Two more. discovers, and there will be no run. But this is an absolutely very good over. Just 3 runs is considered, and that also because there was a 2 runs of a wide slog shot that will get the thick inside edge, and the ball will go towards that mid wicket region for 4 runs. Not exactly where he was trying to place that ball Yeah, one more. was Santosh, but he'll get off the mark with a boundary. 4 of 3 balls. Hmm, really don't know. In the second ball, he was trying to smash it by exposing his stumps. But nonetheless, he'll get 4 runs and the score of Grandiose Cricket Club on to 63 for the loss of 2 wickets. One more ball remaining in this ninth over from Kaushik. White ball. Wayward bowling down the leg side. It will be wide immediately, as signaled by the umpire, and also will cross numbers, shaping up to pick up the second one. But Santosh doesn't want to come up for the next run. It was sweeping after a good over, but then came a boundary of a thick inside edge, and then this one on a wide way. Not say a very happy picture of the second over. It is Over. very short again. Was too much off the back foot plate and square cut doesn't connect onto the safe gloves of the wicket keeper. 9 overs done 965 lasted. It's 65 for 2 for Grandiose Cricket Club.
Same bowler, Jafar. ए, 75 चल जाओ, 75 चला जाओ, इधर इधर டேய் இப்படி போடுறா நீ அங்க போ. இதுக்கு வேற டைம் ஆகிட்டே இருக்கும், வெளியில இருந்து ஆள் வர சொல்லி கூட்டு போனோம்னா. 965 sir. 965 ஆமா 965. जफर कंटिन्यू करेंगे उनकी तीसरी ओवर। कोई विकेट नहीं है अभी उनके नाम में, लेकिन 18 रन दे चुके हैं वो। और अभी करंट रन रेट पे नजर डालिए, 7.22 रन के औसत से ग्रैंडियस क्रिकेट क्लब आगे बढ़ रहे हैं और 11 ओवर बाकी है इस इनिंग्स में। प्रोजेक्टेड स्कोर 150 से 6 रन दूरी। हाँ, थोड़ा सा आगे जाके हल्के हाथों से खेलने की कोशिश कर रहे थे और ये कोशिश हो जाएगी कामयाब, क्योंकि ये गेंद वो फील्डर के ऊपर से चली जाएगी लॉन्ग ऑन की दिशा में और 4 रन इजाफा होते हुए स्कोर में 69 2 विकेट के नुकसान पे चली जाएगी और संतोष पहुंच जाएंगे अपने निजी स्कोर 8 नाबाद 4 गेंदों में। थोड़ा सा फ्लाइट जब भी कर रहे हैं ना जाफर, उनको सेटल नहीं होने दे रहे हैं ये बल्लेबाज। तो ये शायद कुछ सोच के आए हैं कि स्पिनर्स को हम कैसे खेलेंगे। और यहाँ पे दर्शा भी रहे, देखिए कैसे ये कंफर्ट आगे बिल्कुल बैट स्विंग कंप्लीट करते हुए फाइनल की दिशा में खेलने की कोशिश की थी और फील्डर ने भी किया है एक अच्छा काम, क्योंकि अनइवन बाउंस था वहां में, लेकिन आखिरी मोमेंट तक उन्होंने अपनी आंखें जमाए रखी उस गेंद पे, तो ठीक से उसको पकड़ के विकेट कीपर की दिशा में थ्रो करने की कोशिश की थी। ओवर थ्रो का चांस था, लेकिन सिर्फ 1 रन मिलेगा और प्रवीण आ जाएंगे स्ट्राइक पे। 9 नाबाद है अपनी निजी स्कोर 9 गेंदों के बाद। 70 2 विकेट के नुकसान पे फिर से वो भी वही करने की कोशिश कर रहे थे जो संतोष भी, लेकिन टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी, गेंद भी बहुत ऊपर नहीं आई। विकेट कीपर पता नहीं वो अपील कर रहे थे, लेकिन वहां पे तो सिर्फ 3 स्टंप्स ही होता है क्रिकेट में, वो तो पांचवा छठा स्टंप्स तक जाके वो बॉलिंग कर, विकेट कीपर ने इतना स्विंग भी थी नहीं कि वो अपील कर सके। जो भी है, ये फिर आउटसाइड ऑफ स्टंप बिल्कुल फ्लाइटेड डिलीवरी को बिल्कुल सीधा मारने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी कनेक्शन लगा नहीं। 5वां गेंद 10वीं ओवर का जफर, हाँ फिर से कनेक्शन बहुत ऊपर गई है, बहुत ऊपर गई है। फील्डर सेटल हुए थे, लेकिन वो रोप्स के पीछे जाके उनको सेटल होना पड़ेगा, क्योंकि गेंद बिल्कुल उनके पीछे सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए लॉन्ग ऑन की दिशा में फ्लाइट डिलीवरी फ्री सी थोड़ा सा टाइमिंग में चूक गए थे, लेकिन बहुत ज्यादा पावर थी उस बैट में और वो पावर से वो गेंद बिल्कुल ऊपर से चली जाएगी और 6 रन इजाफा होते हुए स्कोर बोर्ड में 77 2 विकेट के नुकसान पे। हाँ, ये गेंद बहुत स्पिन हुई थी, स्टंप्स को भी डिस्टर्ब कर चुके हैं वहां पे। एक प्रश्न जरूर उठा है, ये स्क्वायर लेग अंपायर को पूछ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, और ये गई है थर्ड अंपायर के लिए। हाँ, ये फ्लाइट कर रहे हैं। ये हो सकता है गड़बड़ा वाला मामला, और ये मामला शायद और ज्यादा गर्म और एक शायद खराब खबर बैट्समैन को दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा देखिए वो देखिए शेडो और बैट में जो कनेक्शन है, देखिए थोड़ा सा गैप है और इसी से दर्शाते हैं कि वो एक्चुअली आउट हो चुके हैं और अंपायर का भी इशारा होगा। ये देखिए अभी जिस एक मौका आउट का आ गया है वो सिग्नल। सो 3 विकेट चला गया, ये तीसरा विकेट का झटका और ओवर भी हो गया खत्म। हाफ वे थ्रू है मिड इनिंग्स का। 10 ओवर के बाद ग्रैंडियोस क्रिकेट क्लब 77 3 विकेट के नुकसान पे। அவர் இல்லையா? சரி சும்மா மாட்டி விட்டுருங்க. அப்புறம் அவர் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பாரு. என் மைக் எடுத்துட்டு போகிறேன்.
Sir, batsman name, sir. Nivas Pattinson has come out to the middle to join his partner Praveen, who's left stranded at 9 of 10. But he'll be at the non-striker's end as Praveen will be now facing up to Vicky Vignesh, who has given 7 runs away in his very first over, which was shaping up to be a good one, as was spoiled by some wides and then a boundary to his name. Is slowly running in to play to Praveen, cross-batted stroke towards the mid-wicket region. There is no one. That ball will slowly move off the ropes and go across the boundary for 4 handsome runs. The score moves on to 81 for 3. And Vicky Vignesh has started giving up his runs, and now on to double figures will be his bowling figures at none for 11 in 1.1 overs. Praveen will also go on to Sir, double figures fielder at தானே? 13 of 11 runs, of 11 balls to his name. And he'll be happy that he's considering and playing a small knock, which might just shape up to be a very, very good innings. Again, playing deep inside the crease, wanting to play that stroke over Wicket that keeper, point and gully don't roll fielder. the ball. But the Don't roll connection the was ball. not meant. Into the safe gloves of the wicket keeper. And there's certain kind of bounce that you can see, that extraction from the pitch, which should definitely help, and is helping also this bowlers. Vicky Vignesh again running in, this time much better delivery on towards that batter, who plays with an angle bat towards the man at extra cover. No run. He didn't get a run, Leg. and he'll get off the strike and give the strike to Nivas Slightly. Pattinson. That's your I leg. loved his name that has come up for them, that Gavin Parkinson and now Navis Parkinson. It was Peterson, Gavin Peterson. Now it's Navis Pattinson. There is a bowler from Australia whose name is Pattinson, but this time he doesn't want to attach any name for himself, because he'll say it's Navis who has got the boundary to his name, and he'll get off the mark with a very nice controlled one. There is so much well control of the Mani back sir, foot to go over the top of that ball and play signal it பண்ணுங்க. towards the fine leg boundary to get off the mark and Scoring பண்றனால close to அப்படியே his இது name. பண்ணிடுவோம். Score on to 86 for 3 with that nice boundary. And Vicky Vignesh again proving too expensive. He has given away 2 boundaries already and a single in this over. The 9 runs already of the 4 balls, and this time it has been cut. The point fielder, the cover fielder, I would say, has done a better job this time of cutting that ball away. But a single will still be completed, and even Nivas Pattinson will give the strike to Praveen, who's on 14 of 3. Score on to 87 for 3 with 1 more ball remaining in the 11th over. Clips it off from the off stump towards the square leg region for a single, and will also keep the strike. 11 Over. overs done. Grandiose Cricket Club Keeper, next bowler. 88 for Sir, 3 versus Crazy Cruise. You're watching this ITS 6 September Sir, bowler name, sir. 2024. Huh? It's a beautiful, Sir, 9, absolutely 10 lovely முடிக்கணும் sir. Sunday morning. Not only at the ground of the Vellore cricket turf there in Vellore, Because but sir, also quick move பண்ணுங்க. all the way here in North India, in Gurgaon 88. here in Haryana. Also, it's a Fielders ready. lovely Sunday morning. So it's all smiles as you're Batter sharing ready, out sir, for batter. some great games of cricket today. Sir, Sir, bowler name quick up Venkat. பண்ணுங்க. Second innings Venkat. winning, and after that also there are 2 more matches to be played in this day of this competition. And by what I can see and transpire on this ground, there has to be some very good runs which should come up, and we've already seen 88 of 11 overs earlier in the day. Crazy Cruise, they won the toss and elected to bowl first, so they Batter want change in to see bowling. how the Bowler pitch coming. behaves. Right arm over. Praveen and Nivas Pattinson are the ones who are there now shipping out.
और वेंकट के हाथ में होगी ये गेंद, पहली ओवर कराएंगे वो। ऑफ स्पिनर है, पहले गेंद पे बहुत पीछे जाके रू बना के उसको स्क्वायर कट करने की कोशिश की थी प्रवीण ने। 15 गेंद वो फेस कर चुके हैं, एग्जैक्टली 15 रन में। तो उन्होंने ठीक से भी देखा हुआ है कि ये गेंद कैसे बिहेव करता है, और उनकी दाढ़ी शायद उनके यहाँ पे दाढ़ी है, तो दूर से थोड़ा सा ना हाशिम आमला की तरह भी रखते हैं, साउथ अफ्रीका के फॉर्मर क्रिकेटर हाशिम आमला, जो साउथ अफ्रीका भी खेलते थे और सरे भी खेलते थे काउंटी चैंपियनशिप में। इसको उठा के मारा है, वहां पे एक फील्डर है मौजूद, डीप मिड विकेट की दिशा में 1 रन मिलेगी, और वेंकट अभी 1 रन कंसीड कर चुके हैं। निवास पाटिंसन अभी होंगे स्ट्राइक पे। प्रवीण पहुंच जाएंगे 16 गेंद। स्कोर में इजाफा होते हुए 89, 3 विकेट के नुकसान पे। वेंकट फिर से आ रहे हैं ऑफ स्पिन, निवास पाटिंसन को हल्के से उठा के मारा है उसको शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में, तो कोई रन नहीं वहां पे। तो पहले देखा हमने जफर को कैसे वो दोनों बैटर्स उठा के मारने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ओपनिंग बैटर्स अभी पेविलियन में जा चुके हैं वापस। वेंकट फिर से थोड़ा सा शॉर्ट था इस बार, फिर से बैकफुट पे आके उसको फ्लिक करने की कोशिश की थी, लेकिन वही सेम फील्डर के दिशा में वो गेंद चली जाएगी, तो कोई रन नहीं, स्कोर वही रहेगा 89, 3 विकेट के नुकसान पे ग्रैंडियोस क्रिकेट क्लब के लिए। ये ओवर अच्छा जाता हुआ, सिर्फ 1 रन आया अभी वेंकट के इस ओवर में, और देखिए फुल टॉस, हाँ स्लिप कर गए वहां पे, गेंद को रोकने की कोशिश की थी लॉन्ग ऑफ के दिशा से। जर्सी नंबर 6 वीक आए हैं उस गेंद को के लिए, और सक्षम एक और रन मिल जाएगा, और स्कोर में होती हुई 90 पे पहुंच जाएगी, 90, 3 विकेट के नुकसान पे, और फिर से आ जाएंगे स्ट्राइक पे प्रवीण। देखिए कैसे, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सो गए थे पीछे, बोला हाँ चलिए कुछ सेकंड्स के लिए। ये बहुत ही करारा अपील होते होते अगर ये गेंद थोड़ी सी और नीचे होती तब शायद अंपायर का रेडेड फिंगर ऊपर उड़ जाता, बिल्कुल कनेक्शन मिस हो गया था। और 12 ओवर के बाद क्रिकेट क्लब 90, 3 विकेट के नुकसान पे। लास्ट ओवर फॉर जाफर। जाफर உங்களுக்கு லாஸ்ட் ஓவர்। ये जी तू इधर आ रहा है, நீ உள்ள வாடா சீக்கிரம் வாங்கண்ணா, ஒரே எண்டு தான், குயிக்கா போட்டுடலாம்। ரைட் ஆம் ஓவர், ரைட் ஆம் ஓவர், ரைட் So after 12 overs, Grandiose Cricket Club are 90 for 3. Jaffer will have the ball again in his hand. He will be bowling the last over of his spell immediately. On the very first ball, he will concede a run. There you can see Jaffer 1 for 30. Inexpensive at very little less than 10 runs per over. And as I said, he's the one that is reached while he delivers the ball at the last moment. The ball tweaks at the end like Murli Taran. There you can see as he spins the ball gracefully. That is exactly like Murli Taran. So he might just be an inspiration for Jaffa. You never know. But his name again reminds me. I have this habit of making resemblance with cricketers from the present and the past, and his name resembles with Wasim Jaffer, former India opener who also played from Mumbai. Wasim Jaffer. And but I really don't know how much his batting skills lives up to the billing of Wasim Jaffa.
But he's very much active on Twitter, Wasim Jaffer, and you can always see those tussles happening with former cricketers, and most importantly, with former England cricketer Michael Vaughan. All those friendly banters that you see on social media are so alluring and so enduring to go and discuss on different cricketing topics. The moment Batsman Jaffer కొంచెం with quick the గా ball ready in అవ్వాలా. his hand would speak something different, all with all the ones on the board of this over, of this last ball of his spell. Again, I believe there will be one. No, this time it will be dot delivery, as Praveen was Two almost more. shaping up to play that stroke towards that mid-wicket fence, but couldn't connect and time it properly. No run, fifth ball again after 13th over. Shaping up almost at the same direction. This time it will go over that fielder. And by the time that fielder comes in from the cow corner, the ball will already raise up behind the ropes, and 4 runs will come off from Grandiose Cricket Club as the score moves on to 97 for 3 and Pravin on to 21 of 20. This over is really again Last proving to ball. be costly. Jaffer's bowling analysis will not be healthy. Get fast. 1 for 36 with one more ball remaining in Jaffer's last ball of his spell of his overs. Of the back foot, trying to smash it. This will go towards the deep cover region. And 13 overs Over. done. Jaffer will also finish his spell of bowling at 1 for 37. The score for Rangers Cricket Club is 98 for 3 after 13 overs. वेंकट के हाथ में है ये गेंद. 2 रन दे चुके हैं वो अपने पहले ओवर में, तो वो चाहेंगे कि ये कंटिन्यू रहे उनकी तरफ से. एक वो लाल कलर का एक बंडाना वो सर पे लगाए रहते हैं, स्पेक्स के साथ काफी हैंडसम क्रिकेटर है ये हमारे वेंकट, और एक हीरो की तरह के लगते हैं ये तो शायद मूवीज भी देखते होंगे, मूवी का भी फैन होंगे शायद. ये बॉल टॉस्ट अप कर दिया आउटसाइड ऑफ स्टंप, उसको हल्के हाथों से एक ब्यूटीफुल ड्राइव. देखिए फेस ऑफ द बैट बहुत अच्छा सा उन्होंने दिखाया यहाँ पे, और इसमें फिर से एक रन मिलेगा शायद. मैंने सोचा था रनिंग बिटवीन द विकेट शायद थोड़ा सा धीमी हो गई थी यहाँ पे, और अभी प्रवीण आ जाएंगे फिर से स्ट्राइक पे. तेज नाबाद है अपनी निजी स्कोर 22 गेंद फेस करने के बाद, और आएंगे हमारे एक्टर के साथ वेंकट. थोड़ा सा काउ कॉर्नर की दिशा में गेंद जाएगी, ऑलमोस्ट एट दिशा में 1 रन मिलेगा. वेंकट नाखुश है. वो चाहते थे कि वो फील्डर थोड़ा सा दौड़ के और थोड़ा सा एफर्ट लगाए उस बॉल को कैच करने के लिए, लेकिन थोड़े से फिर से ढीले पड़ गए. तो ये बहुत सीरियस है अपना क्रिकेट को लेके. अभी मैं बोल रहा था तो सपोर्ट करने के लिए कि एक बनाना और वो स्पेक्स लगा के बहुत सीरियस देखिए. उनका बॉलिंग एक्शन भी काफी अच्छा है और काफी कंट्रोल है. वो अपने जैसे वो बॉल को फ्लाइट करते हैं, एक्शन भी काफी अच्छा है उनका. लुक्स लाइक एन इंटरनेशनल क्रिकेटर. जब वो ग्रिप करते हैं उनका एक्शन कैसे बिल्कुल नीचे आके वो बॉल को अच्छी फ्लाइट देते हैं. अच्छे लाइव में देख रहे हैं, कोई भी रूम ज्यादा देते नहीं है, लेकिन 1-2 रन इधर जरूर आएंगे, लेकिन काफी कम्प्लीट काफी सीरियस अपने क्रिकेट को लेके. अभी 2 गेंदों से पहले आपने देखा कि कैसे वो फील्डर को
थोड़ा सा और मेहनत करते ना तो शायद ये कैच में तब्दीली हो सकती थी, क्योंकि बहुत ऊपर से उसको मारा था ये फील्डर। थोड़ा सा शायद मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अभी भी करने की उनकी उनकी बाकी है, तो ज्यादा उनको बोलेगा मत, क्योंकि ये सुबह सुबह का टाइम है, अभी भी 9 बजे भी नहीं है, तो 8:40 हुआ है यहाँ पे। तो थोड़ा सा उनको हम माफ कर सकते हैं, तो लेकिन लंच के बाद नहीं माफ कर सकते। लंच के बाद तो पेट फुल रहेगा और एनर्जेटिक रहेंगे। पांचवा गेंद 14 ओवर का, बहुत ज्यादा फ्लाइट नहीं है, हाफ वे अपील किया था और गेंद बिल्कुल पीछे चली जाएगी विकेट कीपर के पीछे। कभी कभी होता है ये ब्लॉक हो जाते हैं, ये जब शॉट्स मारते हैं ना ये ब्लॉक हो जाते हैं। लेग बाय का इशारा अंपायर से, लेकिन ऑल वंस ऑन द बोर्ड। आप देखिए 1-1-1-1, फिर से एक लेग बाय। आखिरी गेंद है अभी ये लास्ट ओवर का। अपील जरूर की थी, लेकिन लेकिन थोड़ा सा राइट पे चली गई थी, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं अंपायर ने, और लास्ट बॉल को बिल्कुल बॉलर की तरफ ही खेल दिया है। कोई रन नहीं 14 ओवर के बाद। 103 विकेट के नुकसान पे ग्रैंडियोस क्रिकेट क्लब। Bowler coming right arm over. Fielder. Fielder. हाँ. Line மேல தான். 109 for 3 from Grandiose Cricket Club as Shyam has the ball in his hand. What a lovely pickup shot for a huge six that was. Off stump. I beg your pardon, due to some technical glitches. It was in my system. Longest spike at வெளியே. Some mark issue, because of which the first two balls I couldn't present across to you. So excuse me for that. At 109 has the score come up, and look at Praveen and Nivas Pattinson now building up a small healthy total here, and a nice little partnership which is coming up. And Praveen on to 30 of 26 with a grand six which came off the blade of his, and Nivas Pattinson on to double figures also of 10, not out of 10. And Grandiose Cricket Club as of now they at a very very healthy current run rate of 7.6. Again wanted to play the ball down the ground almost in a crossover position, but he needs to be mindful of his back foot because the wicketkeeper is standing very very much up to him. Ready, batter. Now jersey number 6 weak. Once bowler run up start panda, you should be ready, right? The name of Shyam going to us, so that's what I'll actually pronounce and say it again and again as he tunes up the ball, which is gentle loosener, gentle pace to Praveen. The kind of run up he takes, he feels like a spinner, but he's actually a very very gentle medium pacer. Just 3-4 stumps, walks towards the stumps that he does there when you see that. And it'll be again very very outside off, someone going to slash it over point, make the connection again. So that will be 4 consecutive dot deliveries now for Shyam, but not all the balls were on the bunny, mind you. He is not being able to control as of now.
despite having bowled 17 balls, which is 2.5 overs, still not in absolute control of the ball, bowling little very short last ball of the 15th over. Fuller delivery this time, wanting to go down the ground. There's a fielder at long off. We field the ball, and it's just in number 10. One over, one ball, one run of the last ball of Shams over. 15 overs done and dusted. Grandiose Cricket Club are 110 for 3, and also there are 23 extras to that. Look at that scorecard. So it doesn't help the cause, and mainly those are like wise. We haven't seen a single no ball being bowled and no free hit until in this inning. So that's a kind of a consolation that crazy crews can take for that, because no balls also sometimes deters the confidence. There you can see the pie, the runs pie. There you can see so who has taken over whom, and it has quickly vanished off the screen. So I can't comment much on that. At the moment, 5 more overs remaining. You can see that graph. While that wicket fell, it got blunted, but that straight arrow at the top will suggest that they have got something very good up their sleeves, and the runs has been very, very consistent. So I don't see this run rate dripping down anything beyond lesser than 8 runs per over. They would love to make it around 8.59 runs. And if they can do that, the score might just go above 160, 165. Never know. So using the long handle might, to a very good effect, can come up to a very good cause for Rangers Cricket Club. But Crazy Crews won't love that, because electing to bowl first, this might not be a happy figure for them, and they might just be left wondering that was it a bad decision to ask the opposition to go and bat first. So whatever will be the story, we'll have another chance when the chase will be on. Round the wickets is Joker Surya 7 now, and that will be shot outside of stump, bowling round the wicket to the right-hander Praveen, who's on 31 of 30. And having considered the 15 runs already from his 2 overs, he also had bowled little wayward in his second over, having bowled some crazy wides, I would say, down the leg side, which really hasn't helped the cause for him. But at the moment, it's a dot delivery for him, and Surya 7. Again, outside option, wanting to slash it, exposing all the stumps. That will be a bye, I believe, because there was no Nick there waiting for the umpire signal. Yes, a bye has been signaled. 1 run as they will cross numbers, and now Nivas Pattinson will have the strike after a long time. He's been on 10 not out of 10, and was watching all the action at non-strikers end, having seen of how the ball is behaving from the off spinner, and now Joker Surya will still continue to bowl round the wicket to the right-handers, and this time also again to Nivas Pattinson. Ultra and Grandfather Rumors. This is fuller delivery outside of some driven very well towards a man at the point. So 1 run to him. The drives look out to be very good when it comes out effectively, and that drive from Nivas Pattinson to get off the strike was a nice case in point. Those singles won't hurt the batter so much, as soon as much as you can bowl more straighter, but not giving some room to the batters. But here you can see where he's taking his stance as Joga Surya again onto him. This is down the ground. Has the connection been good? This is a very good connection at last moment. The ball will go over that fielder as he remains a spectator. A grand 6 to Praveen as he marches on to 37 of 33, and the score on to 118 for 3 in 15.4 overs. Lovely, absolutely lovely connection while the bat meets the ball right on the middle of the bat. That sound would be so serene in his ears. 5th ball on the 16th over, again exposing all his thumbs. But the bat has got squarer more towards the third man fence, who the fielder doing a good job of not tumbling over. Otherwise, probably they might have thought to come for the second one, but it was fully in total grasp of him. As the throw came in long and hard towards the wicketkeeper, 1 run has been stolen.
And one more ball now remaining as Nevas Pattinson batting on 11 not out of 11 will have the strike. Current run rate is very good. Poisely at 7.52 to projected score of 150 in last ball. Placed it very well along the carpet. It is going across the boundary for 4 as the fielder was running in there. He thought it will be cut off as it green patches across to the brown areas. It got very, very onto quickly. 16 overs done and dusted. Grandiose Cricket Club are 1, 2, 3 for 3. ग्रैंडियोस क्रिकेट क्लब 123 3 विकेट के नुकसान पे 16 ओवर के बाद 4 ओवर शेष हैं, मतलब 24 गेंदें बाकी हैं इस पहली इनिंग्स में। आज ये पहला मैच है दिन का ITS 6 सितंबर 2024। वेंकट आए हैं अपनी तीसरी ओवर करने के लिए। फ्लैट डिलीवरी ऊपर उठा के मारा है, मिडिल स्टंप से कोई फील्डर मौजूद है और सेटल होके कैच आराम से लपट लेंगे। इजी नहीं था, माइंड बिल्कुल इजी नहीं था, लेकिन आराम से उस कैच को जज किया, आपने बिल्कुल थोड़ा सा लेफ्ट आके आराम से लपेट लिया और चौथा विकेट का हो गया यहाँ पे पतन। ग्रैंडियोस क्रिकेट क्लब 123 4 विकेट के नुकसान पे प्रवीण वापस चले जाएंगे पेविलियन में। और ये जो विकेट है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट उनको मिला है क्योंकि प्रवीण लुक रहे थे डेंजरस। 38 के निजी स्कोर में हो जाएंगे आउट। 35 गेंद उन्होंने फेस किया हुआ है और वेंकट को मिल जाएगा अपना पहला विकेट। एक विकेट 6 रन दे के उनका 13वीं गेंद पे ग्रैंडियोस क्रिकेट क्लब अभी है 123 4 विकेट के नुकसान पे। AD batter name AD. Ready. ஒண்ணுதான் One more. Hey, one more to go. Ready? Batter. கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணுங்க. ஒரு பால் தான் இருக்கு.
थोड़ा ऊपर डालो. கேவலமான பால். Over. கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த 39 for the last of 4 wickets. लेकिन क्या ओवर रहा है ये, बिल्कुल वेंकट का 16 रन दे चुके थे उन्होंने और काफी अच्छा ये स्ट्रोक देखिए, बैक टू बैक सिक्सेस मिल गए थे उनको यहाँ पे। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन उससे पहले जो एक कैच उन्होंने लपटा ना, अगर वो लपट लेते वो रोप से पहले, वो काफी अच्छा कैच होता था। क्रेजी क्रूज आज दिन में पहले उन्होंने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब ये निर्णय शायद थोड़ा सा महंगा साबित होते हुए, क्योंकि रन्स पे थोड़ा सा नियंत्रण कर नहीं पा रहे हैं। ये फिर से देखिए दौड़ के लेंगे ये 2 रन यहाँ पे और स्कोर में इजाफा होते हुए 100 140 141 4 विकेट के नुकसान पे। ये लीग सुपर लीग मैचेस आप देख रहे हैं, ITS 6 सितंबर 2024 का। नीवस पटिंसन स्ट्राइक में है फिर से, 18 बाद 15 गेंदों में बहुत आउटसाइड ऑफ स्टंप उसको वहां से खेल चुके हैं। वो क्रॉस बैट करके लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन मिलेगा और नीवस पटिंसन ले लेंगे। और एडी को देखिए आते ही 4 गेंदों में 15 रन, क्योंकि वेंकट के पिछले ओवर में उन्होंने चटकाए 2 लंबे छक्के और आउट होते होते बचे थे। उसमें से जो पहला छक्का उन्होंने लगाया था, कंट्रोल नहीं कर पाए थे उस कैच को, लेकिन उसके बाद जो 6 रन वो तो बिल्कुल ही क्लियर था। फिर से क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलते हैं, लेकिन ये वाइड हुआ, काफी ऑफ स्टंप से बाहर था, लेकिन विकेट कीपर ने उसको भी अपने सेफ दस्तानों में रखा और स्कोर में बढ़ोतरी होते हुए 1-4-3 4 विकेट के नुकसान पे चौथा गेंद। इस बार हाथ खोलने का थोड़ा सा मौका दिया था, लेकिन कवर्स पे ये सिर्फ 1 रन होगा और फिर से नीवस पटिंसन को ले लेंगे स्ट्राइक। ये काफी अच्छा वहां पे खेलेंगे। देखिए उनका रन रेट 8 रन से भी ऊपर चला गया था। ये थोड़ा स्लो, ये गेंद थोड़ी सी हल्की स्लो आई थी पहले से, लेकिन 8.15 के औसत से ये चल रहा है अभी। ये 8.07 हो चुका है, क्योंकि वो डॉट डिलीवरी हो चुकी है। आखिरी गेंद 18 ओवर का। टाइम नहीं कर पाए, टाइम बिल्कुल नहीं कर पाए। वो लॉन्ग ऑफ का फील्डर पहले ही वेंकट ही लगते, वो पहले ही गिर गए। शायद उनका पैर कहीं पे अटक गया होगा। वो अभी भी वहां बैठ के समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो गया। ये देखिए लॉन्ग ऑन पे खेलना चाहते थे, लेकिन लॉन्ग ऑफ पे चली गई थी। वो शायद कैच लेने की कदर पे जरूर खड़े थे, लेकिन उनके हाथ से छूट गई थी और वो गिर गए, लेकिन उसको कैच पकड़ने की कोशिश में गिर गए थे एक्चुअली। और 18 ओवर के बाद ग्रैंडियोस क्रिकेट क्लब 146 4 विकेट के नुकसान पे। White ball. A white ball to start off the 19th over, the penultimate one from Sham. Not a healthy start. So much of comedy errors. The ball went behind. The fielder couldn't stop it. Again, the other fielder who was assisting him also couldn't do much of that. Wide, but I feel there will be a couple of runs also. And a little bit there as the fumble has been made by both the fielders there. But 150 is up with the wide.
And they've got 4 runs. They've actually picked up 3 runs, I believe. Smashed it very well. The drive looks to be so. This could have been a run out shy the Stumps, but they'll get overthrow for sure as they come back for the second one. Not a good start. Not a good start at all for Sham. Wide deliveries runs, and again, this overthrow will not help the cause for him. 19 runs already given of 19 balls. There you can see 2 wides. 3 wides actually in 4, which made that 150 up for Grandiose Cricket Club. Again, a full toss in the third ball, which will be the second of the over because that was a wide, which will be played. Again overthrow. These are crazy scenes. This Shyam's over has been producing some blunders on the field. I would say the first ball, as the partnership moves on to 31 of 13, there's a blunder as the ball was hit towards long on, and then he couldn't have control. The assisting fielder also couldn't control it this time. The ball has been hit over both the fielders settling under. One of them coming in from sweeper cover will take control of the ball and will take that catch and keep in full control of him as the 5th wicket is Fielder down name, for sir. Grandiose Cricket Club. With Fielder name Akash. 154 on the board, and Shyam will pick up his 2nd wicket with 2 for 21 to his name. There we go. He stood up that 3 ball more. and just with a bat swing, he completed that formalities with open arms. There you can see Batsman name. remaining 3 last moment, very last moment onto his ties. He picks the wicket. Batter name The Money. fielder assisting him is going for the claps, but he was really not there looking at him. Probably might not have been too happy with the kind of scores that been racked up by Grandiose Cricket Club versus Crazy Cruise, as Mani Vanan is the one who will go out to the middle to join his partner. Half of the side now back in the pavilion. AD is still there at the non-strikers end with 16 of 5 to his name. The 4th ball of the 19th over, the penalty meant one slower delivery outside off stump. Mani Vanan looking at the umpire, thinking that it might be wide, but that ball was right slightly inside the line which belonged to the umpire. Score will remain at the same at 154 for 5 with 2 more balls remaining in the 19th over. So technically 8 balls remaining, giving himself some room playing. It was a cover. Oh, the fielder. The fielder doesn't judge the ball well, and this Shyam's over goes from bad to worse. Oh my goodness. Has produced runs which really will be working more towards the favor of Grandiose. You can see it was really beat in the air. One bounces, and then at the last moment he was little slow to go down on his knees to stop the ball. So last ball of the 4th over, giving himself some room, playing it down the ground as straight as possible. The fielder is there from long off. I don't want any blunder in the last ball. There's so much of goof ups happening in this over. Shyam wants to finish this over very quickly. Finally, it will be done and dusted. The penultimate over is finished. 19 overs done. 6 overs remaining. Grandiose Cricket Club 159 for 5 versus Crazy Cruise. The last over will be bowled by Kaushik. Slower delivery. It was supposed to be believed, but he takes it and hits it towards the man at long on. He field the ball, give it back to the bowler. The score moves on to 160 for 5. And Kaushik has a bowling figure of 1 for 25. With this 20th over, he'll also finish his spell of 4 overs. Being economical, not been very expensive. Has a wicket to his name also. Outside off stump, wanting to thrill on his crease, but doesn't connect. But back onto his crease very early. So the opportunity of stumping has been dismissed.
1 run of the first ball, then a dot delivery. 4 more balls remaining in this innings. Going for the reverse. Doesn't connect. The ball will Bold, bold. sneak. Actually, will get to his ties and onto the Oh, bold. stumps as his bowled him. 6th wicket is down for Grandiose Cricket Club, and AD has to go back to the pavilion after scoring 16 of 7. Bro, மூணு The பால் split போட்டிருக்கீங்களா screen again comes on your screen. ஜி மூணு பால் There you can போட்டிருக்கீங்களா see how the ball must have just gone onto the stumps. Reverse. Wanting to smash it on the ground. Almost falling onto the stumps himself. The bat comes off his gloves, and the connection was not there. But a dismissal will definitely be created as the 6th wicket is down and Kaushik picks up his 2nd wicket. He has 2 for 25 to his name. Grandiose Cricket Club are 160 for 6. ரெடி 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 Chandru is the new batter. He'll be facing Kaushik. At the fall of the 6th wicket, full toss. He plays it towards that long on and a fielder to wait for that ball to come because there's so much of uneven bounce. And there you can see also that ball bounced very much. So he did very well to wait for that ball to come and then control it and then throw towards the bowler. 5th ball of the last over. Outside off stumps, smashes it beyond extra cover. Go towards that fielder at long off, wanting to go for the second one, but it will just be a single. This is a good over which is coming up in the last over. Just 3 runs from it, a wicket also. Last ball of this first innings. Full toss wanted to hike it towards fine leg. He will not get any connection. It will be a leg by to finish off this innings. 20 overs done, and Grandiose Cricket Club are 163 for 6. So the target for Crazy Crews is 164. பேட் பேட் எல்லாம் They பார்த்தது were still there on the pitch thinking, oh my goodness, 20 overs are done. Then the batsman just walks off. So it has been some very good time on the field, especially for Grandiose Cricket Club, as they have racked up some handsome runs, I would believe, and they would make a stance for themselves to try and go and defend this total versus Crazy Crews. For Crazy Crews, the target is simple. It's 164 of 120. They really need to rack up those runs, and we'll be back with the chase very soon. So don't go anywhere. Stick to these YouTube channels of professional cricket competitions and Ultimate Cricket series. We'll be back very, very shortly. Thank you.
Hello and welcome and back to the chase now. As crazy crews, they require 164 of 120 balls. As Navin Raj has already started and the opening of the account with the first runs off the bat from Vijay as he has played that ball very well and to get the things rollicking and moving for crazy crews at one for no loss. And now Akash M will be shaping up himself to face as Navin Raj tuning up to bowl him outside off stump, little bit uppishly played through the covers, and he'll again rotate the strike and get off the mark immediately of the very first ball that he faces. The target is 164 versus Grandiose Cricket Club. They have displayed some very good batting performance here. Mind you, I'm using the word very twice because they were asked to bat first on a pitch which seemed to be a little tricky as Crazy Chris won the toss and elected to bowl first. And now they are up to the chase here. On the leg side, wanting to flick it down the leg side, probably, and a wicket keeper didn't do justice with his gloves. A couple of runs, and I believe that might be a wide if it is. And the umpire, it's a leg by, it's not a wide. So two, it has come off the ties, I believe, or off the pads actually. This angle of the camera, not actually allowing things to judge too much. It's actually four leg buys, as it seems to say. Wanting to slash outside edge stump, and there is a sleep, I believe. If the camera angle can be changed, then it will say that there was a slip, and they are all in celebration mood. The man in blue, as the first wicket is down, Novin Raz gives the breakthrough immediately in the very first over. Crazy Crews are 6 for 1 as Vijay has to go back to the pavilion. Crazy Crews 6 for 1. They have lost their first wicket in the very first over of the fourth ball of Navin Raj as the batsman wanting to slash that, just getting a tick outside edge on to the safe hands of the first slip, assisting the wicketkeeper Navin Raj again on to the full toss ball, wanting to drive the ball. Rafiq Ahmed, who has come on to take charge and to join the company of Akash M, who's at a non-strike end of one and not out of one. And this was little Fuller as he wanted to drive almost in a half-hearted position as he was driving that because he didn't look too much comfortable while he was doing that. Again, wanting to smash it onto mid wicket. I really don't understand this ploy of why you really need to do those. The target is 164, but you've also lost your partner. You've lost a wicket of your team. So that was crazy. Crews have started very crazily, I would say. After the end of the first over, they are 6 for 1 versus Grandiose Cricket Club, chasing a target of 164.
कविन पीटरसन आए गेंदबाजी करने के लिए। अपना दूसरा ओवर, क्रेजी क्रूज 6, 1 विकेट के नुकसान पे। और बैट का अंदरूनी किनारा लगते हुए वो पहले स्लिप में वो कैच लपट लिया गया था। और क्या खूबसूरत शुरुआत है क्रेजी ग्रैंडियोस क्रिकेट क्लब के लिए। फिर से देखिए वही शॉट मारने की कोशिश जो जो रफीक अहमद ने कोशिश किया था आखिरी गेंद पहले ओवर का। और आकाश एम उनको दिखाने की कोशिश कर रहे थे शायद कि कैसे उस शॉट को मारते हैं, लेकिन वो भी कनेक्ट नहीं कर पाए। टारगेट है 164, जरूरत है एक अच्छी स्टार्ट की यहाँ पे सूझबूझ की। लेकिन ऑनेस्टली वो सूझबूझ मुझे थोड़ा सा हल्की दिखाई दे रही है यहाँ पे। हाँ, इस बार कनेक्शन अच्छा है, इस बार कनेक्शन अच्छा है। क्या फील्डर है वहां मौजूद। इस कैमरा एंगल से एक्चुअली ठीक से देख नहीं पा रहे, लेकिन 4 रन आएंगे उनके खाते में और लॉन्ग ऑन की दिशा में 4 रन आ गए हैं। आकाश एम 5 पे चले जाएंगे और ये स्कोर अभी डबल पे चला जाएगा। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे क्रेजी क्रूज के लिए। वहां पे देखिए जर्सी नंबर 12 आकाश एम इस बार काफी बाहर ऑफ स्टंप के और इसको जाने दिया। ऑलमोस्ट फर्स्ट स्लिप के हाथों तक आ गई थी गेंद, तो बहुत ही ज्यादा डायरेक्शनलिस हो गए थे। काविन पीटरसन आज कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाए बैट से, तो मैं इन्हीं को ब्रायन लारा की तरह बोल रहा था आज। और ये अभी लेफ्ट हैंड बॉलर भी है, तो एक अच्छा ऑलराउंडर है। हाँ, काफी खूबसूरती से खेला गया है ये कवर्स के दिशा में। और गेंद ये 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 4 रन मिल जाएंगे उनको। ये अच्छी शॉट है, काफी काफी फोर्स के साथ ये खेला गया था शॉट, और ये बहुत खुश होंगे। ये पहला ओवर काविन पीटरसन का महंगा साबित होते हुए ये देखिए 9 रन ऑलरेडी आ चुके हैं 3 गेंदों में, उसमें से एक वाइड भी शामिल है। और क्रेजी क्रूज पहुंच गए 15 रन पे 1 विकेट के नुकसान पे। 149 और रन चाहिए उनको। तो रन्स हैं डिफेंड करने के लिए, लेकिन रन्स लीक करने की जरूरत नहीं है। वो लॉन्ग ऑफ के दिशा में उठा के मारा है और ये गेंद इस बार जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। ये ओवर महंगा साबित और होते हुए 6 रन का इजाफा टारगेट पे, टोटल पे। और क्रेजी क्रूज पहुंच गए 21 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ओवर पिच गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप। हाँ बिल्कुल, उन्होंने आमंत्रण किया था और ये निमंत्रण उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आकाश एम। और वो पहुंच चुके हैं 15 रन अपने निजी स्कोर में सिर्फ 5 गेंदों में। और रफीक अहमद दूसरी छोर पे आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ सीख तो जरूर रहे होंगे, क्योंकि ये 4 गेंदों में केविन पटरसन 15 रन, 5वां गेंद दूसरे ओवर का। थोड़ा सा कुछ हुआ है वहां पे, तो उन्होंने बोला कि माफ कीजिए आपको फिर से दौड़ के आना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा उठा उठा के मारने की भी कोशिश कर रहे, क्योंकि ये पहला पावर प्ले ये चल रहा है और जो फील्डर्स है वो बहुत अप है। इस बार हल्के ऑटो से रेस्पेक्टफुली डिफेंसिव मोड में जाके आकाश हमने खेला। तो जब ये 4 सिक्सेस मारते हैं तो एक डिफेंसिव स्ट्रोक देखना बहुत ही कम बनता है। तो ये मैं कहूंगा केविन पीटरसन थोड़ा सा ये उनके अभी लाई थोड़ा सा अच्छा है और थोड़ा सा शांत हो जाएंगे अभी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कभी कि एक डिफेंसिव के बाद थोड़ा सा मूड ऑफेंसिव भी बन जाती है। देखिए मूड ऑफेंसिव बनता हुआ और ये ऑफेंसिव मूड उनको देंगे 6 रन। ये ओवर बहुत ही खराब हो चुकी है। 21 रन आ गया है केविन पीटरसन का ये पहला ओवर में। और क्रेजी क्रूज है 2 ओवर के बाद 27 रन 1 विकेट के नुकसान पे। उसमें से देखिए आकाश एम ने मार लिए हैं 21 रन 7 गेंदों में। बेहतरीन शुरुआत है क्रेजी क्रूज का। 137 रन और चाहिए 108 गेंदों में। करंट रन रेट 13 पर 50 और रिक्वायर्ड रन रेट है 7.61। तो ये जो एक शुरुआत उन्होंने सोचा था वही हुआ। एक विकेट जरूर गंवाया है, लेकिन रन से जरूर सहमत होंगे। 27 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर्स के बाद।
Naveen Raj. Navin Raj has the ball in his hand, and you can see the deep display picture of Navin Raj. That's MS Dhoni. Looks like a big fan of MS Dhoni. We all are, isn't it? So not surprised, but it's surprising to see his face. I thought, hang on, that's MS Dhoni. That's a nice figure, but I hope that he replicates what MS Dhoni sometimes does with the ball in his hand. Because with the bat, MS Dhoni is a figure, he's a household name. There's not been a single Indian I've seen who doesn't know MS Dhoni or Sachin Tendulkar. So he's a crazy name, isn't it? And after that heroics of his that six that punctuated that win after 28 years for Indian cricket team to leave the World Cup at Wankhede Stadium in 2011. Also of what he has done for his IPL franchise Chennai Super Kings is a name which everyone would love to emulate for themselves. Navin Raj again White ball. looking to pull off the leg side. This is not something that MS Dhoni will be proud of because he is a wicket keeper, and then what a wicket keeper he's go off your stumps and a flash in a second, a fraction of a second will go off the bails. He is crazily quick. This MS Dhoni. Navin Raj now on to next ball. Akasham batting on 21 not out of 7. This is crazy from Crazy Cruise. They are playing the lofted drive onto perfection. This time again wanting to play it over the extra cover, but this has gone actually more squarish over cover. So just one on there. We'll see doing the shadow practice Akasham and looking at his bat also. That's in the thick outside edge of his bat, but luckily for him, it fell at no man's land. So 1 run to the total, which will make it to 30 for 1. And now Rafiq Ahmed, he will be on strike facing Navin Raj. Outside off stump, deliberately leaves that ball. Where is that ball gone? It will be caught actually at extra cover. He only gets the line, doesn't get the elevation, and the ball has been hit straight down the throat of the fielder there, who takes a very safe catch. And the second wicket is down for Crazy Cruise. They are 30 for 2 in 2.3 overs. There you can see the replay, the rush of blood, I would say, from Rafiq Ahmed, because he was looking so much at what Akash M was doing at the other end, who was on 22 not out of just 8 deliveries. Probably did actually punctuated him to play that stroke, but only to leading to his own downfall. So second wicket is down for Crazy Cruise. It's 30 for 2 on the board after 2.2 overs. Jafar is the one who has come out to the crease to join Akasham. He was expensive when he had the ball in his hand, Jafar. But with the bat, he would look to put a similar disposition onto his opponent in Grandiose Cricket Club, who has picked up 2 wickets now. And now the fifth ball of the third over from Navin Raj onto Jafar. That he was trying to play a walking stroke. I really don't understand this ploy from Crazy Cruise. You have certain runs on the board, but exposing the stumps very early on, trying to play that lofted drive. I really don't understand that ploy. I'm sorry, but it has to be crazy. You've not been even 5 overs done and dusted. You've lost 2 wickets, but you're not in control of your batsmanship. Last ball of the third over. Outside off stump, this time wanting to drive the ball. The outside is been missed from the bat, and now Vinland doesn't believe that it didn't carry the outside. It's onto the safe gloves of the wicketkeeper. There is a slip in company, so that's why the drive it looks to be more important. 3 overs done and dusted. Crazy Cruise 30 for the loss of 2 wickets.
नांदू थम्पी क्रिक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। उनको बॉल थमाया गया है। जल्दबाजी पे ज्यादा नहीं है ग्रैंडियोस क्रिकेट क्लब। उनको पिछले ओवर में एक विकेट मिल चुका है। लेकिन आकाश एम जो अभी फेस करेंगे नांदू थम्पी को, वो है 22 नाबाद 8 गेंदों में। उन्होंने कुछ अच्छी शुरुआत की थी क्रेजीली फॉर क्रेजी क्रूज, तो इसलिए उनका स्कोर जाके इजाफा हुआ है कि 10 रन प्रति ओवर के साथ, लेकिन 2 विकेट्स भी खो चुके हैं। हाँ देखिए कैसे डाउन विकेट जाके उसको मिड विकेट की दिशा में खेल चुके हैं। वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है और मिल जाएंगे 4 रन लॉन की दिशा में। अच्छी शुरुआत और नंदू थाम्बी के पहले ही गेंद पे उनके ओवर पे 4 रन आते हुए और आकाश सैम चले जाएंगे 26 9 गेंदों में। हाँ ऑफ स्टंप के बाहर से लेके मारता और थोड़ा सा रूम भी आई थी बॉल, गेंद थोड़ी सी हल्की भी आई थी, बहुत ज्यादा पेस था नहीं तो। और डाउन तक विकेट भी जा चुके थे तो उनके लिए तो मौका अच्छा था क्योंकि ये पावर प्ले अभी भी चल रहा है तो फील्डर्स बिल्कुल स्प्रेड आउट है नहीं। दूसरी गेंद नांदू थाम्बी की फुल डिलीवरी सीधा उठा के मारा है। इस बार मिलेंगे 6 रन। हाँ क्या शुरुआत है इस ओवर का, 4 उसके बाद 6। आकाश एम 32 पे पहुंच गए हैं 10 गेंदों में। ये बोले ये रविवार थोड़ा सा और रोमांचक और लजबदार बनाते हैं। हाँ हाँ क्या उठाया है, क्या उठाया है, मिडिल स्टंप से लुफ्ट उठाया है उन्होंने। वो क्रिकेट खेलने में माहिर है और बोल रहे हैं और ये जलवा मैं अभी थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। और नंदू जी को बोलेंगे सॉरी आप आए हैं लेकिन आपको थोड़ा सा डिपॉजिट मुझे करना पड़ेगा। देखिए वहां पे यहाँ पे खड़े एक पैर आगे और ये क्या नजारा है। कोई मुझे पता नहीं कि कौन कौन अपना कैमरा निकाल के उसको लिया है क्योंकि कोई फोटोग्राफर मुझे वहां दिखा नहीं है, लेकिन कोई प्लीज अपना कैमरा से उसको कैप्चर कीजिए क्योंकि आकाश हम खेल रहे हैं बेहतरीन बारी वहां पे। और अभी 1 रन ले लेंगे, 11 रन दे चुके हैं नंदू थाम्बी। अभी जाफर आ जाएंगे स्ट्राइक पे जो अभी ऑफ द मार्क हुए नहीं अभी भी। 3 गेंदों में उन्होंने कोई रन लिया नहीं है लेकिन काफी अच्छा शुरुआत हो गया इस ओवर का। नांदू थाम्पी क्रिक थोड़ा सा फ्लिक कर दिया है हल्के हाथों से, लेकिन कितना ज्यादा उन्होंने शफल किया देखिए। ऑफ स्टंप तक आ चुके थे उसको गेंद को खेलने के लिए और कपल ऑफ रन आ जाएंगे। दोनों फील्डर्स आ गए थे लेकिन थोड़ा सा कम्युनिकेशन में हिचकिचाहट मुझे दिखी क्योंकि जब तक वो आते बॉल को पकड़ के थ्रो करते 2 रन चुरा लिया था और जफर हो जाएंगे ऑफ द मार्क और अपना खाता खोलते हुए 2 रन पे पहुंच जाएंगे 4 गेंदों में और स्कोर में बढ़ोतरी होते हुए 43 2 विकेट के नुकसान पे। नंदू थाम्बी 5वां गेंद अपना 4th ओवर पे डाउन द लेग साइड फ्लिक करने की कोशिश की थी लेकिन ये हो जाएगा एक अतिरिक्त रन क्योंकि वाइड का सिग्नल कर दिया गया है अंपायर। अपने दोनों हाथ को फैलाए बाएं दाएं बोलने के लिए कि मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। 44 तो विकेट के नुकसान पे। नांदू थाम्बी दौड़ते फिर से होकर और फिर से डाउन द लेग साइड। ये ज्यादा ही ये देखिए आप इतना दूर से दौड़ के आते हैं और अगर आपकी हल्की सी पेस अगर आप डाउन द लेग साइड रखते हैं, अगर विकेट कीपर ने वो पकड़ नहीं पाई तो ये फाइनल की दिशा में बहुत तेजी से 4 रन के लिए चली जाएगी। तो इनको समझना पड़ेगा। ये देखिए लेफ्ट हैंडर के लिए तो बेहतरीन गेंद होती है क्योंकि ये जो उसकी जो सीम जहाँ पे प्लेस हुई है ना, लेफ्ट हैंडर के लिए तो बहुत ही अच्छा गेंद होता है लेकिन राइट हैंडर के लिए ये तो माफ कीजिएगा उनका पैड में लग के चली जाएगी या तो बैट पे लग के चली जाएगी। आखिरी गेंद 4था ओवर का फुल डिलीवरी इस बार थोड़ा सा स्लो था, मिड ऑन को चीरती हुई ये चली जाएगी लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक फील्डर मौजूद जो सी नंबर 43 फील्ड करते हुए 1 रन मिलेगा और आकाश एम अपने आप को रखेंगे स्ट्राइक पे। 4 ओवर के बाद क्रेजी क्रूज 46 2 विकेट के नुकसान पे।
Manivanan has been given the ball in his hand. Off spinner gracefully played towards the square leg region for a single. Score we move on to 47 to 2. But despite a very good start, they have lost 2 wickets. But now this White ball. partnership of Jafar and Akashem would look to do the repair work as the wide has been signaled by the umpire of the second ball of Manivanan. Score we move on to 48 for 2. There is a slip. Now you have a slip, but you're bowling it on midland leg to make the ball spin away from him. Spin and spin onto him. But then what's the point of putting slip fielder? Why don't you toss it up? Why don't you invite a drive? Make that slip fielder work. Because you ball it short, then it allows the batsman to go off the back foot and punch it towards mid wicket. Giving again there, the ball is on middle leg. This is much better delivery. But try and make that ball pitch on off and middle so that it comes onto you, or the batsman drives and he commits a mistake, and that will provide you a chance to grab a wicket. Otherwise, that slip has absolutely no reason of standing there. This has been played very uppishly, but at the vacant mid-on region. The fielder for long on will run slowly and cut it off. A single as the 50 is up on the board for Crazy Cruise. Two more. With that single, and they'll be mightily pleased that the chase is on. They need 140 more of 94 onto him. This is crazy. It will be crazier for Crazy Cruise because Manivanan celebrates. The ball has gone and hit the timber. He is bowled him, Jafar. He was expensive with the ball, but with the bat, he couldn't do justice of why he was asked to do. This was a very good ball, spins so much, and he couldn't judge the line, and the ball will disturb the timber of the middle and the leg stump. Third wicket is down. Crazy Cruise of 50 for 3 with one more ball remaining in the fifth over. A leg by has been signaled on the last ball, and that will finally finish the over. They've also lost a wicket in this over. Crazy Cruise are now 51 for 3 after 5 overs. Noted, sir.
शमी पलानी को थामा गया है गेंद। नया बॉलर है जो उनको ये बॉलिंग लाइनअप में शामिल भी किया गया था और वो रंजित बिशॉय को बॉलिंग करेंगे। हल्के से टर्न कर दिया है ऑन साइड पे, एक सिंगल मिलेगा और ऑफ द मार्क हो जाएंगे। उसके साथ काफी लंबा कद है उनका और जैसे मैंने उसको देखा तो मुझे यह दिलीप वेंगसरकर की याद आ गई थी। अभी दिलीप वेंगसरकर फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं और लॉर्ड्स में उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंचुरी था जो इंडिया को गाइड किया था विक्ट्री की तरफ। काफी अच्छा क्रिकेटर, लंबे कद दिलीप वेंगसरकर। हाँ क्या धूल, क्या धूल, क्या मिट्टी। हाँ ये तो बहुत जोर से आ रही है। लेकिन शामी पलानी पे नजर डाली, उनका उनके चेहरे पे अच्छी सी कट है, उनकी ग्रे ग्रे हेयर एंड लुक्स टू बी वेरी वेरी स्मार्ट क्रिकेटर एंड और अपने गेंदबाजी से भी वो थोड़ा सा स्मार्टली खेलना चाहेंगे। लेकिन वो हवा देखिए, बहुत हवा का झोंका, तो उससे थोड़ा सा अगर वो इनवर्ड और मूवमेंट कर सकते हैं तो उनको बहुत उससे पिच से और हवा की वजह से मदद मिलेगी। थोड़ा सा रुक गई हवा, लेकिन ये बहती हुई हवा है नेचर का। और ये विकेट होते होते बची है, उनको खिलाया है और यही लाइन पकड़ के रखने की जरूरत है शामी पलानी को। उसमें उसमें डबल माइंडेड में चले गए थे, फ्रंट फुट पे जाए या उसको ड्राइव करे, और यही यही जो माइंड में जो दुविधा होती है उसी में उनको खेलना चाहिए। 112 और चाहिए 88 गेंदों में। शमी पलानी फिर से इस बार उठा के मारा है डाउन द ग्राउंड जाके, ये गेंद जाएगी सीधा उस होर्डिंग को छुएगी और 6 रन मिल जाएंगे आकाश एम को। वो पहुंच जाएंगे 42 सिर्फ 17 गेंदों में और स्कोर का हिसाब होते हुए एट 58 टीम के नुकसान में। लेकिन ये देखिए, ये बिल्कुल आए और बिल्कुल सीधा उठा के मारा, लाइन को बिल्कुल भाप लिया था ये शामी पलानी का। और ये ओवर उनका इतना अच्छा सीधा सीधा नहीं हटेंगे, तो 7 रन दे चुके हैं अभी। फिर से इस फुल टॉस गेंद इस बार मैं बोलूंगा भाग्यशाली रहे कि आकाश एम ने उसमें ज्यादा कुछ किया नहीं है, सिर्फ ड्राइव करने की कोशिश की थी कवर्स की दिशा में, कोई रन नहीं है। लेकिन जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं ना 18 गेंदों में 42, ये तो कहीं पे भी मार सकते थे। तो इसलिए मैं बोल रहा था इज वेरी लकी शामी पलानी कि ये गेंद सिर्फ कवर पे गया और कोई रन भी नहीं आई। 5वां गेंद छठा ओवर का। बैकफुट पे जाके उसको फाइनल की दिशा में एंगल किया था, फील्डिंग में थोड़ा सा तो मिसफील्ड जरूर हुई थी, लेकिन सिर्फ 1 रन मिलेगा। फाइनल की दिशा में कोई नहीं है, उस फील्डर को थोड़ा सा ऊपर बुलाया उन्होंने, तो ये बहुत जल्दी चली जाएगी। तो ये पकड़ के रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आखिरी गेंद छठा ओवर का पलानी का, फिर से फुल टॉस उठा के मारने की कोशिश की थी, वहां पे फील्डर है मौजूद, ये ले लेंगे विकेट शामी पलानी अपने पहले ओवर के आखिरी गेंद में। और रंजित बिशॉय वापस चले जाएंगे, जिनको मैंने दिलीप वेंगसरकर बोला था। सफेद कलर का हेलमेट ये बहुत ही कम देखने को मिलता है आजकल, तो ये रेयरेस्ट ऑफ द ओकेशंस था। थोड़े और टाइम बिताने के लिए वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखिए इस फुल टॉस को कहीं कहीं पे भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने बस उठाया, आराम से लपक लिया वो फील्डर ने और चौथा विकेट चला गया यहाँ पे। और 6 ओवर के बाद क्रेजी क्रूज 59 4 विकेट के नुकसान पे। तो जोकर सूर्या 7 आए हुए हैं।
बल्लेबाजी करने के लिए, वो नॉन स्ट्राइकर पे होंगे क्योंकि पिछले ओवर में एक विकेट आखिरी गेंद पे शामी पलानी के बॉल पे चली गई थी, लेकिन अच्छी गेंद नहीं थी। उस गेंद में तो विकेट मिलने का कोई चांस था नहीं, लेकिन उस फुल टॉस के थोड़ा सा हल्के हाथों से उठा के मारने की कोशिश की थी, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद था और बहुत ही आसानी से कैच ले लिया। मणिवन्नन आएंगे अपने ऑफ स्पिनर का जलवा दिखाने के लिए। पहली ही गेंद पे ललचाया था बैट्समैन को, एक रन को लेने की कोशिश की थी, उस बैट पे लगी नहीं थी, लेकिन ये 22 होता जरूर अगर वो लोग वो रन लेने में सक्षम होते तो। 4 रन दे चुके हैं, एक विकेट भी मिल चुके हैं उनको, मणिवन्नन को। इकोनॉमी उनका 5.61 है, तो ठीक ठाक है। हाँ, फिर से उठाया, फिर से आकाशम ने उठाया है। ओ जबरदस्त कैच होते होते बच गई। ये देखिए सुपरमैन एफर्ट होता है यहाँ पे, लेकिन 6 रन मिलेंगे उनको बिल्कुल स्ट्रेट लॉन्ग ऑन की दिशा में, और आकाश एम पहुंच जाएंगे 49 की निजी स्कोर में। ये रिप्ले देखिएगा मणिवन्नन का, हाँ फ्लाइट डिलीवरी आउटसाइड ऑफ स्टंप उठाया, बिल्कुल खड़े खड़े वहीं से उठाया, और हाफ ए डजन उनके नाम पे। ये अगर लपट लेते ना, ये रिप्लेस तो आप 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार देखते और सबको दिखाते कि हाँ जी मानो या ना मानो, ये मैं ही हूँ सर जी। आकाश एम सिर्फ 1 रन दूरी है अपने अर्धशतक से। 49 22 गेंदों में क्या बारी खेली है उन्होंने क्रेजी क्रूज के लिए। 99 चाहिए अभी, ट्रिपल फिगर से सिर्फ डबल फिगर पे आ गए हैं अभी। चौथा गेंद 7वां ओवर का, ये हल्की सी थोड़ा सा इस बार फ्लाइट दिया नहीं, थोड़ा पुश कर देते इस गेंद को, लेकिन डिफेंसिवली खेला आकाश एम ने। बैक टू द बॉलर, बैक टू बैक डॉट्स उस बढ़िया छक्के के बाद। इस बार फिर से डाउन द विकेट जाने की कोशिश, इस बार नीचे नीचे जाएगी, लेकिन इस सिंगल के साथ वो पूरा करेंगे अपना अर्धशतक सिर्फ 24 गेंदों में। हाँ जी, बैट दिखाई, ये आपका टाइम है क्योंकि आपने खेली है काफी अच्छी बारी, तीन बाउंड्री और 5 लंबे लंबे चक्के, और इस सिंगल के साथ क्रेजी क्रूज का हो जाएगा 66। 4 गेंदों में 66 में से 50 उन्हीं के ब्लेड से आया है। 98 और चाहिए 79 गेंदों में। मणिवन्नन दौड़ के जाएंगे वो वैकेंट रीजन पे अपने गेंद रिफिल करने के लिए, ऐसे कोई है नहीं। और बहुत ही अच्छा है आकाश का, स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है क्योंकि सिर्फ 24 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक कंप्लीट किया था, और 7 ओवर भी हो जाएगा खत्म। क्रेजी क्रूज 67, 4 विकेट के नुकसान पे। After 7 overs, Crazy Cruise are 67 for 4. Shami Ballani has the ball in his hand, almost deceiving with the very first ball of his second over. Joker Surya 7. He's a fast bowler and he opened the bowling for his team Grandiose Cricket Club. And with the bat, he has a difficult, not difficult, rather I would say a task with the bat where he really need to dig out his team from a hole. It's not a very big hole, but if they keep on continuing losing partners and wickets, especially that big fish of Akasham, then they might be in troubled waters. There you go, like kind of a walking shot. His thing has to be in his mindset. The strategy really needs to give up a single and rotate the strike as much as possible and give it to Akasham rather than trying to drive or play some unorthodox shots. Fourth ball of the 8th over, chipping down the ground was Joker Surya and doesn't connect too well. The ball hitting two end of the bat and finding the fielder.
he will definitely walk up to Akash M and have a talk. And of course, the talk will be to try and just snatch it with a very soft hand and allow them to rotate the numbers because they need 97 of 74. It might just rack up. Current run rate is better than the record run rate, but you never know how the complexion of the game changes very, very quickly as you are heading just few overs away from halfway mid innings of the phase. Shamipalani again on the Joker Surya 7 full toss ball, cross batted stroke almost to the reach of that fielder. This would have been a very different catch, a crazy catch to dismiss one of the players of Crazy Cruise. So, but it's safely negotiated. There's no there. You can see the split screen will help us. There's so much of dust coming on. One more ball remaining in the eighth over from Shami Palani. Will be bowling to Akasham, drives the ball little lavishly. It was in the air, and jersey number 10 will field the ball. He'll get a run, will keep the strike for himself for the next over. 8 overs done and dusted. Crazy Crews are 69 for the loss of 4 wickets. ப்ரோ அங்க எங்க ப்ரோ போனீங்க? ஒன்றி ஓகே ஓகே. Curved away for such a nice boundary. Now Akasham trying to play the reverse shot. He's asking the umpire, isn't it a wide? But probably because the law says that if you attempt a reverse shot, then despite going the leg side, he won't be given a wide. And I think the umpire has done a commendable job of not listening to what the batsman is doing and knowing the draws very, very fully. And that's called game awareness again from the official. So very good job, very well done from the umpire, not to give it at a wide. But 91 is the equation needing of 69 balls. Manivan shaping on the ball to Akasham, very short delivery, deflected bad angle towards mid wicket, no run. He has Joker Surya 7 to his company, had a non-striker and is batting on 2 not out of 6. Flatter delivery. He calls so quickly, moves his feet. Will it be a catch? The fielder will just be a spectator. You can see his head rotating from one end to the other end as he sees that ball going over சார் ஒன் மோர் him சார் and towards the side screen for half a dozen. And Akash moves on to சொல்லிட்டு போறேங்க 61 நான் for கேட்ச் 4 பிடிச்சிக்கிறேன் delivering and score on to 79 for 4. There you எங்க see நான் தள்ளிட்டனால deliberately எனக்கே lifts போடுறாரு that ball up and the அதுக்கு ஏதாவது connection அவுட் was விட்டுருன்னா இந்த perfect பால் முடிஞ்சதுமே ஸ்கோர் as மாத்திரம் சொல்லுங்க. he puts his hand on his ear, probably because of the sound of the ball hitting the side screen. We couldn't hear it from this end, especially me because I'm sitting at some other corner of this planet Earth in India. It has been again hit very much in the air, but this time there is a fielder. Oh, it goes between his hands. Crazy crews are playing some crazy cricket, and crazily they have got the 6 runs also. That will also finish the end of the over. 9 overs done and ஓவர் dusted. Back-to-back sixes. It's 85 for 4 on the board for Crazy Crews.
Bowler right. शमी पलानी कंटिन्यू करेंगे अपना स्पेल। 2 ओवर में 1 विकेट लेके 10 रन उन्होंने कंसीड किए। क्रेजी क्रूज 85 4 विकेट के नुकसान पे कुछ बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए इस बार हल्के हाथों से ये सिंगल छुड़ाएंगे। हाँ जी, ये गेंद आई ही नहीं है थ्रो पे, तो ये तो एक्चुअली फील्डर के हाथों में दिया गया है। और पहले आज क्रेजी क्रूज ने पहले टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। और ग्रैंडियोस क्रिकेट क्लब ने बैटिंग करने के बाद उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर खड़ा किया था आज। वो 164 चाहिए था, 163 मारा था उन्होंने। और शामी बलानी फिर से आकाश है, और वो बिल्कुल सीधा उठा के मारने की कोशिश की थी, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये शामी फलानी को पहली ओवर भी उनका अच्छा था, लेकिन सिर्फ एक 4 आ गए थे। लेकिन अगर उनको हटा दिया जाए ना, तो उनका ओवर बहुत ही अच्छा था। बोल्ड हो चुके हैं आकाश एम, थोड़ा सा स्विंग हो गई थी वहां, देखिए हताश निराश, और इनकी कहानी हो गई है खत्म। शामी फलानी ने फंसवा दिया है एक बड़ा बड़ा झटका यहाँ पे ग्रैंडियोस क्रिकेट क्लब के लिए, और 5 विकेट चला गया है। 86 5 विकेट के नुकसान पे, लेकिन बहुत बड़ी मछली आकाश एम 67 बना के 33 गेंदों में वापस जाना पड़ेगी। देखिए थोड़ा सा गेंद धीमी रखी, ऑफ स्टंप पे रखी, बिल्कुल बैट का स्विंग करते हुए, लेकिन थोड़ा सा खड़े हो गए थे और बॉल जाके लग गई ऑफ स्टंप पे। ये बिल्कुल देखिए वहां पे खड़े हो गए, बिल्कुल खड़े, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कर क्या करे, विकेट कीपर शायद बोल रहे होंगे ये आपने हमें विकेट दे दिया है मेरे दोस्त। और 5 विकेट चली गई है, और क्रेजी क्रूज अभी 86 5 विकेट के नुकसान पे। वेंकट आए हैं जोकर सूर्या 7 को साथ देने के लिए। शामी पलानी ने ले लिया है अपना दूसरा विकेट, 2 फॉर 11, 2.3 गेंदों में। अब ये इक्वेशन पे नजर डालिए, 78 चाहिए 63 गेंदों में। और नेल बाइटिंग फिनिश की तरफ हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चितता का गेम है, तो ये
कुछ भी हो सकता है। अभी दोनों बैट्समैन सिंगल डिजिट्स में हैं। वेंकट ने तो अपना खाता खोला भी नहीं है, पहली बार वो फेस करेंगे। बहुत हल्के हाथों से फ्रंट फुट पे आके डिफेंस किया शामी पलानी की इस బౌలర్ गेंद में, యాక్షన్ మాత్రం కొంచెం చెక్ लेकिन बहुत बड़ी मछली फंस गई है वहां पे। आकाश एम का विकेट வெயிட் चलता பண்றேன் किया शामी पलानी ने। வெயிட் பண்ண வெயிட் स्लोअर गेंद थी கொஞ்சம் और வெயிட் பண்ணுங்க सीधा आके खेलने की நான் வெயிட் कोशिश की பண்றேன் थी, लाइन அதை को மாத்த भाग नहीं பார்த்து சொல்லு पाए எனக்கு और गेंद जाके लगी स्टंप्स पे। यू मिस आई हिट वर्क्स एवरी टाइम। तो ये शामी पलानी का भी मंत्र था और उन्होंने उनको लपट लिया और मिल ले लिया उन्होंने अपना दूसरा विकेट। पांचवा गेंद अभी यहाँ पे होगा 10वीं ओवर का। क्रेजी क्रूज थोड़ा सा क्रेजीली खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए उनका आधा जो टीम है वो भी चले गए हैं बिल्कुल पेविलियन के रास्ते। तो ये थोड़ा सा रणवी टीम का जो स्ट्रेटेजी है ना, ये थोड़ा सा उनका बदलने की बहुत ही जरूरत है वहां पे। और ये देखिए ये रिप्ले, ये आकाश एम का रिप्ले देखिए, ये थोड़ा सा हाफ हेलीकॉप्टर टाइप स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी और गेंद जाके बिल्कुल, ये कहाँ से निकली ये गेंद देखिए। ये रिप्ले तो देखना बनेगा अभी। जैसे उन्होंने किया था ना, ये बहुत ज्यादा बैकफुट पे चले गए थे, इनको लॉफ्ट करने की फील्ड से कोशिश की थी शामी मलानी को, तो इसलिए ये यहाँ पे अटक गए और उनका चला गया है वो विकेट। और वेंकट अभी एक विकेट एक बॉल फेस करने के बाद वो है 86, स्कोर रहेगा अभी 86, 5 विकेट के नुकसान पे। पांचवा गेंद 10वीं ओवर का शामी पलानी का, ये बहुत ही सुंदर सा ड्राइव। इमीडिएटली उन्होंने हाथ दिखाया नॉन स्ट्राइकर को कि नहीं जी, ये रन हम नहीं ले सकते। पार्टनरशिप की बातें किया जाए तो ये तो पार्टनरशिप अभी स्टार्ट हुई भी नहीं है, लेकिन स्टिच करने की बहुत जरूरी है कि एक एक बनाए, एक हल्के हल्के से ये खेले। इनसाइड एज हो सकता इनचेंज था गेम ओवर है, देखिए फिर से विकेट कीपर की तरफ से डायरेक्टली स्टंप पे मारने की कोशिश की थी। उनको लग रहा था कि वेंकट क्रीज से थोड़ा सा शायद बाहर थे, लेकिन उनको वो स्टंप्स पे मार नहीं पाए। 10 ओवर के बाद क्रेजी क्रूज 86, 5 विकेट के नुकसान पे वो चेस कर रहे 164 ग्रैंडियोस क्रिकेट क्लब के विरुद्ध। ये आज दिन का पहला मैच है और ये टूर्नामेंट ITS 6 सितंबर 2024। और इस मैच के बाद 2 मैचेस और भी है आज, तो पूरा आज संडे आप शाम तक लुफ्त उठा सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, चाय वाय पी सकते हैं, और अभी भी अगर कोई लेट से उठे हैं, कवरेज ज्वाइन किया है, वो भी चाय और ब्रेकफास्ट हमारे साथ कर सकते हैं और आंखों देखा हाल कमेंट्री सब सुन सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पे। प्रोफेशनल क्रिकेट कॉम्पिटिशन्स और अल्टीमेट क्रिकेट सीरीज की ये यूट्यूब चैनल पे, और मैच का लाइव मैच देखिए। ये वेलोर क्रिकेट ग्राउंड, वेलोर में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है और कुछ खूबसूरत नजारा है यहाँ पे, क्योंकि मैचेस होने वाले हैं दिलशप और क्योंकि और यहाँ पे और एक अच्छा सा ब्रीज भी होता हुआ और सन खिली हुई है, बिल्कुल सन किस्ड जो कहते हैं, वो क्रिकेट का नजारा यहाँ पे। 10 ओवर के बाद क्रेजी क्रूज 86, 5 विकेट के नुकसान पे। Nivas Pattinson has the ball in his hand. He'll be bowling to Joker Surya 7, who's on 3 not out of 7. The score after 10 overs is 86 for 5 for Crazy Cruise. And they need some distance to travel because now they have 78 of exactly 60 balls. So halfway through is the ball, Seema ball. Yes and no. Yes and no is the hesitation. The ball has been thrown towards the wicket keeper, but there is none.
there'll be a single which will come up because of that single which has been taken on the very first ball of Nevis Pattinson's very first over. Now Venkat will be there on strike. He's yet to get off the mark, having faced 3 balls. Score will be 87 for 5, and they now need 77 of 59 balls. And how do they like to approach his innings? Because after that big fish, Akash M going back to the pavilion because he did much of the bulk of the scoring. And this might miss because I'm sure sometimes you put on the strategies. This batsman would Batsman do கொஞ்சம் this faster much ready of ஆங்க. scoring, and I'm sure Akash M have done exactly that. But in while in pursuit of trying to up the run rate, he perished and getting himself pulled. But that ball has been defensively played very well. Those defenses when you do off the back foot right there on the crease is such a nice sight to see. Especially talks so much of and volume of how composed the cricketer is. And on the 19th of September, Bangladesh are touring India, and they will be very, very confident because they have defeated Pakistan in Pakistan at Rawalpindi Cricket Stadium 2-0 in a historic test series. And so they will be a very, very confident lot when they face India and in Chennai on the 19th of September. So mark your calendars also because Test cricket is coming Sir, sir, in India sir, again. And Dulip Trophy வாங்கிக்கங்க. tournament is going on. India Sir, A I is mean, taking on India D, and India B is versus India C. And this is some very, very nice time for Indian cricket fans to get glued to their screen. You can watch on your laptop, TV, mobile. There's so many appliances and gadgets nowadays to get hooked onto cricket. I'm a big fan of cricket and an ardent follower of Test cricket, so I'm really, really looking forward to that. But the bad fact was that the historic test match between Afghanistan and New Zealand was abandoned without a ball being bowled. Not even a toss was being done. So that history has gone back. So after 91 years, actually, a test match has been abandoned, and the first time in India that a test match has been abandoned. So this is some crazy stats. And not for crazy crews because they are on 87 for 5, and I would love to try and middle those runs as much as possible and get the target quickly. If not quickly, and up versus Grandiose Cricket Club because they are bowling very, very well at the moment. 5th ball of the 11th over. Nevish attention, up and over. And only did they score. That would have been a catch. Some kind of confusion. Probably they were looking at each other, both the point and the gully fielder. But it's Navis Pattinson who is at the receiving end because he feels that the wicket has gone down begging here and should have been 89 for 6. But again, they have now got a couple of runs here. The score on to 89 for 5 as Vengan gets off the mark with those couple of runs. Last ball from Pattinson. Drives, it's in the air. Is that a catch? It was almost halfway through, but it will go beyond and that failed extra cover. One run has been taken, and Venkat will keep the strike. 11 overs done. And Crazy Crews are 90 for the fall of 5 wickets, chasing a target of 164 versus Grandiose Cricket Club. नब्बे 5 विकेट के नुकसान पे 11 ओवर के बाद विनय कुमार एस के पास है ये गेंद
थोड़ा सा शॉट था, आउटसाइड ऑफ स्टंप था, उस बॉल के ऊपर आके वेंकट ने मारा उनको। பால जो तीन உருட்டாதீங்கம்மா, பால गेंदों के உருட்டாதீங்க, बाद பாஸ் பண்ணுங்க. और एक रन जरूर आ जाएंगे उनके खाते में उस सिंगल के बदौलत, और स्कोर पहुंच जाएंगी 91, 5 विकेट के नुकसान पे। और इक्वेशन देखिए 73 और रन चाहिए 53 गेंदों में। जोकर सूर्य सवा 7 अभी वो फेस करेंगे। विनय कुमार एस को ड्राइव कर दिया, लेकिन बॉलर को ही ड्राइव कर दिया है, तो फील्ड कर लेंगे उस गेंद को। स्लो डिलीवरीज काफी काम आएंगे यहाँ पे, क्योंकि जब बैट्समैन ऊपर से मारने की कोशिश करते हैं, ये स्लो डिलीवरीज कभी कभी उनको थोड़ा सा फूल कर देते, थोड़ा सा उनको चकमा दे देते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी जरूर क्रिएट करते हैं फील्डर्स को। फील्डर्स बहुत पीछे चली गई अभी, तो क्योंकि पावर प्ले भी खत्म हो चुका है यहाँ पे। हाँ, ये कैच हो सकता था, ये ड्रॉप है, ये कैच लपते लपते बच गई जर्सी नंबर 10। सचिन तेंदुलकर खुश नहीं होंगे, क्योंकि तेंदुलकर तो एक बेहतरीन फील्डर रहे हैं अपने जमाने में। और विनय कुमार एस को एक विकेट मिल जाती है अपने पहले ओवर पे। एक हाथ जरूर उठा दिया था वहां पे, लेकिन उनके उंगलियों में लग के वो गिर गई है। एक रन जरूर मिलेगा। अभी वेंकट फेस करे विनय कुमार एस को। वेंकट ने बहुत जोर से इसको ड्राइव करने की कोशिश की है, एंड कपल ऑफ रन्स मिलनी जरूर चाहिए, लेकिन एक रन कपल ऑफ रन मिल गया एक्चुअली। और आउटसाइड ऑफ स्टंप बहुत ही बढ़िया ड्राइव लगाया उन्होंने। और स्कोर पहुंच चुका है 94, 95, 70 रन, और इसकी जरूरत है 50 गेंदों में। यहाँ पे विनय कुमार एस के 5वां गेंद, फिर से स्लैश करके मारा है, लेकिन ये एक ऐसी जगह बॉल जाके गिरी है जहाँ पे कोई फील्डर का दृश्य नहीं है, लेकिन स्वीपर कवर से फील्डर आके उसको फील्ड करेंगे। एक रन जरूर मिलेगा, और जोकर सूर्य 7 आ जाएंगे स्ट्राइक पे उस एक सिंगल के साथ। और स्कोर पहुंच चुका है 95, 5 विकेट के नुकसान पे। एक गेंद शेष है इस 12वें ओवर का। विनय कुमार दौड़ के आ रहे हैं जोकर सूर्या 7 को गेंद करने के लिए। और फिर से देखिए कितना बाहर, सारी गेंदें उन्होंने बिल्कुल ऑफ स्टंप पे रखा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा बाहर रखा हुआ है, इसलिए हर एक गेंद में उनको एक रन देना पड़ रहा है। सिर्फ दूसरे वाले में कोई रन नहीं था, लेकिन वो भी गेंद इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अभी ये ओवर हो गया खत्म, 6 रन उन्होंने दे दिए इस ओवर पे। और 12 ओवर के बाद क्रेजी क्रूज 96, 5 विकेट के नुकसान पे। नेविस पटिंसन आए हैं गेंदबाजी फिर से करने के लिए अपना दूसरा ओवर। 4 रन दिए हैं नेविस पटिंसन ने, तो वो अपने आप को भाप रहे होंगे कि कैसे एक या 2 विकेट छटका है यहाँ पे वो ग्रैंडियोस क्रिकेट क्लब के लिए। ये बहुत बड़ा अभी एक चुनौती नजर नहीं आ रही है ग्रैंडियोस क्रिकेट क्लब के लिए, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी बहुत धीरे धीरे से अपना innings சார் நீங்க innings வந்து आगे बढ़ा அவர் रहे हैं। வந்து दोनों நிக்கிற வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு டைம். அவர் வந்து நின்னுட்டாருன்னா நீங்க ஸ்டாண்ட்ஸ்க்கு வந்தே ஆகணும். 11 और 12 बॉल्स रेस्पेक्टिवली उन्होंने फेस किया है। निवास पटिंसन फिर से दौड़ के आ रहे हैं वेंकट के लिए। वो बिल्कुल स्क्वायर होके उस गेंद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन टप्पा खा के ठीक उनका बाहरी अंदरूनी किनारा लगते हुए ये बॉलर के पास ही खुद चली जाएगी, निवास पटिंसन के पास, और कोई रन नहीं, तो स्कोर रहेगा 97, 5 विकेट के नुकसान पे। देखिए 67 और चाहिए उनको 45 गेंदों में। खोल के मारा है, ऊपर मारा है, फील्डर मौजूद इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अपॉर्चुनिटी जरूर क्रिएट करने का था वहां पे चांसेस। और ये अपील शायद रन आउट के लिए बिल्कुल ही नीचे गिर गए हैं ये
लेकिन ये रन आउट का मौका हो सकता है शायद। हाँ देखिए, थर्ड अंपायर के लिए अभी गया है, ये काम थोड़ा सा बढ़ चुका है थर्ड अंपायर के लिए। वो उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी उनको काम पे लगना पड़ेगा क्योंकि ये रिव्यू गई है ऊपर। बहुत ही ऊपर मारा था, थोड़ा सा बैकवर्ड टाइप कैच करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन थ्रो भी जो उनके कलीग है उन्होंने काफी अच्छा थ्रो किया था विकेट कीपर के दस्तानों में। क्या उन्होंने ठीक से कहा कि हाँ ये टच एंड गो होगा, ये रिप्ले थोड़ा सा और पास से देखना पड़ेगा हमें। हाँ ये गेंद, हाँ शॉर्ट हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं अपने क्रीज से। अगर बेल्स ऊपर आ गई है ना तो बिल्कुल चलता कर दिया है उन्होंने इनको। और ये थोड़ा सा अच्छी न्यूज शायद नहीं होगी ये क्रेजी क्रूज के लिए। ग्रैंडियोस क्रिकेट क्लब चाहेंगे कि ये फिर से एक मौका बन जाए उनके लिए, और अगर ये गया ना तो छठा विकेट गिर जाएगा ये कि ये क्रेजी क्रूज के लिए। और फिर बोलेंगे ये क्रेजी रन आउट है, तो इन वो चाहेंगे कि वो जो उनका नाम है वो अप्लाई ना हो इस रन आउट में, क्योंकि अभी तक 100 रन भी बने नहीं है और 3 रन और भी शेष हैं 100 रन से। हाँ वो आ गया है आपका सिग्नल, और ये सिग्नल कह रहा है कि ये उंगली उठाने की जरूरत है। छठा विकेट का हो गया है पतन, और वेंकट जा रहे हैं वापस धीरे धीरे अपने कलीग्स को ज्वाइन करने के लिए डग आउट में। और केविन क्रू नहीं, इट्स क्रेजी क्रूज है 97 6 विकेट के नुकसान पे। श्याम आए हैं गेम बल्लेबाजी करने के लिए, और वो ज्वाइन करेंगे जोकर सूर्या 7 जो दूसरी छोर पे 7 नाबाद है 12 गेंदों में। चौथा गेंद 13वीं ओवर वाइड का। बॉल। बिल्कुल डाउन द लेग साइड चली गई है, वाइट बॉल का इशारा इमीडिएटली अंपायर से, दोनों हाथ फैलाते हुए अतिरिक्त रन आ गया अभी वाइट के हिसाब से, और स्कोर अभी फिर एक बढ़ोतरी होते हुए 99 6 विकेट के नुकसान पे। और एक रन आउट, जो रन आउट कभी कभी बहुत अगलीज होते हैं, तो ये नहीं देखना चाहेंगे। चौथा गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, फिर से उसको पोक करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ उसमें से संबंध बना नहीं पाए बैट और बॉल के बीच में, तो निकल गई हल्की सी, और विकेट कीपर के सिर्फ दस्तानों में चली जाएगी। आखिरी अच्छी गेंद, ये ओवर अच्छा गया, एक वाइड, एक 2 डॉट्स और एक सिंगल, एक विकेट भी है महत्वपूर्ण, उठा के मारा इस बार, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन की दिशा में, तो 1 रन मिलेगा और ऑफ द मार्क भी हो जाएंगे शाम अपनी दूसरी गेंद में। एक बॉल बाकी और ओके सर। क्रेजी क्रूज का आ गया है 100 रन का आंकड़ा, अभी 6 विकेट के नुकसान पे क्रेजी क्रूज। आखिरी गेंद 13वीं ओवर का। हाँ बिल्कुल स्टंप्स पे अगर ये बैट लगता नहीं ना तो अंपायर का जो उंगली है वो तो जरूर उड़ जाती, ये जरूर उड़ जाती। तो ये बच गए यहाँ पे, हल्का सा शॉर्ट था और बहुत ही स्लोअर बॉल था। 13 ओवर के बाद क्रेजी क्रूज 101 6 विकेट के नुकसान पे। 101 101 7 overs. சார் யார் லீட் பண்றா? யார் அவர்? ரெடி சார், கொஞ்சம் குயிக்கா பண்ணுங்க சார். ரெடி சார், மணி சார் பண்ணுங்க. 7 overs remaining. இன்னும் 27 நிமிஷத்துல 7 ஓவர் போடணும், கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருங்க.
So 7 overs remaining in this contest. Crazy Cruiser 101 for 6, wanting to chip down the wicket to hit it on the ground. Doesn't make the connect. Is a Joker Surya 7, who's on 8, not out of 14 now, with having faced that ball. And now Vinay Kumar as will try and make a mark, a name for himself, because he is yet to pick up a wicket. That ball. Last over, he has been bowling very short, and that's the reason why just one of the ball was not hit for a run in the second ball. Otherwise, all the other balls were being hit for at least a minimum of one run. So that run right up should be there from Vinay Kumar. So Joker Surya again. This time it's a full toss. Surya Kumar hits it to an area where there is no one patrolling the boundary, and the fielder will run, will slowly jog around from long off to get that ball retrieved and back in action. But this was very good hit from Joker Surya 7. He needs some runs because with the ball he has actually given some wicket. Slow delivery outside off stump, climbed onto that ball and plummeted it to that vacant region for 4 runs. The score will move on to 105 for 6, and Surya 7 on to 12, not out of 15 with that stroke. Move himself on to double figures. That's a nice looking shot, very nice looking shot. Even a top order batsman will be very proud of. Vinay Kumar again onto Joker Surya 7, this time much slower outside off stump. Again drives the ball towards that long offense. There is a misfield which will allow Joker Surya 7 to again retain the strike, and will be now facing the fourth ball again from Vinay Kumar, as was given away actually 6 runs in this over. White ball. That will be a wide. That will be definitely be a wide. It was Vinay Joker Surya 7 was trying to reach out to that ball, doesn't make a connect. But the extended hands of the umpires also go out to signal an extra in the form of a wide. The score moves on to 108 for 6 in 13.3 overs. They need a required run rate of 8.62 per over to keep themselves alive in this contest. Look at that, 56 needed of 39. It's not almost a neck and neck, but they are still there in this contest. So anything can happen, and it's imperative that you viewers do keep tuning here, because anything can happen. Ball set off stump, one leg up, was trying to sledge it through covers, but the ball will go towards that mid wicket and towards that cover and long off region between them for a couple of runs. Joker Surya on to 16 of 17 as he exchanged numbers, double exchange of numbers in that over of that fourth ball. Better delivery, and there you can see as the ball got tucked away, he had to climb onto the ball to play that stroke. So those deliveries coupled with some dots will definitely help the cause, because they're almost they're not as of now in neck to neck competition, as I've mentioned. But you never know, in some space of some deliveries they might just go off to that direction. Last ball of the 14th over, as the score says 1-1-1-6, and it will remain the same after 14th over for Crazy Cruise. Triple 11 for 6. சார் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ணுங்க சார், குயிக்கா பண்ணுங்க. विनय कुमार एस के पास है गेंद, और उनका तीसरा ओवर फाइनल की दिशा में ये खेलने की कोशिश की थी,
बैट अलग तरीके से गया था और ये जाएगी बाउंड्री। गोल पोस्ट की तरफ 4 रन के लिए। बहुत ही धीरे धीरे गई थी ये गेंद। वो बैट देखिए कैसे उन्होंने बस एक झाड़ू की तरह से उनको उनको बस स्वीप कर दिया था और ये हल्के हल्के हाथों से ये धीरे धीरे चली गई है ग्राउंड एरियाज की तरफ से और 4 रन की दिशा में 115 पे पहुंच गई है स्कोर। और बहुत ही रूम दे दिया था हाथ खोलने के लिए। जोकर सूर्या 7 अभी 19 गेंद के बाद ये बन जाएगा 20 गेंद और 22 रन की निजी स्कोर पे। वो अभी उनको एक मौका है अपने आप को दर्शाने के लिए कि वो वो उन्होंने गेंदबाजी अच्छी नहीं की थी लेकिन वो बल्लेबाज है काफी काफी अच्छे वाले, काफी महफूज कर लेनी चाहिए अपनी जगह टीम में ताकि ऐसे ऐसे कुछ रन्स खेल पाए जिससे टीम को फायदा भी हो। और क्योंकि आप काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं तो तो ये चाहेंगे कि तो बैट से वो कुछ अच्छा प्रदर्शन जरूर करे। और यहाँ पे 7 रन के हिसाब ऑलरेडी हो चुका है मनी फनत के ये ओवर। फिर से देखिए बहुत ही शॉर्ट और काफी टाइम दे दिया था श्याम को बैकफुट पे जाके उसको लॉन्ग ऑन की दिशा में एक रन तो बनाने के लिए। स्कोर फिर से पहुंच जाएगा 119 6 विकेट के नुकसान पे। और 2 गेंदे शेष है अभी 15 ओवर का। ये काफी काफी धीरे से ये नेल बाइटिंग फिनिश हो सकता है और एज ऑफ द सीट कंपटीशन हो सकता है। और फिर से देखिए बहुत ही फॉरवर्ड शॉट बैकवर्ड शॉट लेग पे ये हल्के हाथों से खेला। कोई रन नहीं। आखिरी गेंद 15 ओवर का बलान के द्वारा डिफ्लेक्ट कर दिया है ये फाइनल की दिशा में लेकिन सिर्फ 1 रन मिलेगा क्योंकि वो फील्डर ओवर। तेजी से आते हुए उस गेंद को रोकने के लिए 15 ओवर के बाद क्रेजी क्रूज 120 6 विकेट के नुकसान पे। Lewis Pattinson has the ball in his hand to bowl his third over. Has a bowling figure of none for 9. He's bowling to Joker Surya 7, who definitely would look to use a long and chips down the wicket, goes down the ground. It's very, very high. Is there a fielder? Is there a fielder? There is a fielder who will settle underneath and take that catch comfortably with the back of his hand. And Joker Surya 7 has to go back to the pavilion after catcher scoring name 20 yaar? and the 7th wicket is down for Crazy Cruise at 120 for 7. And this is a very, very big wicket. And Nevas Pattinson will be happy to get a wicket of his name. And there you can see, giving himself so much of room to play that stroke, but couldn't connect it. The height was definitely there, but the angle was really not there as the fielder settled very well and long off to complete the formality of a catch. 7th wicket is down. Crazy Cruise are 120 for 7. எதுக்கும் மாற்றி சொல்லுங்கள் சார் எமர்ஜென்சிக்கு
seventh wicket is down in the form of Joker Surya 7. An important wicket that Nivas Pattinson has grabbed in the very first ball of his third over. And now we'll be bowling to Vicky Vignesh, who has joined Shyam. Good ball. Good ball. All the three stumps are there. If the bat was not there, I am sure the off stump would have been in the business of getting hit by the cricket ball. But at the very last moment, gets evaded there. So good bowling. Very good bowling. Took the wicket of Joker Surya 7, who's gone for 23. And now he has balled right there on the money. Vicky Vignesh runs into ball to again. Vicky Vignesh wanted to glide that ball. Little bit of room, but it was very, very close for comfort for a cut. And really not in a position to play that ball. He was playing too much behind that crease. I would love to play more of the front foot as the run rate keeps on creeping up. 44 required of 29 now. This finally he'll them very slowly and will get a run off the bat and will get off the mark of the second ball that he faces. And now he'll give the strike for Shyam. As the score now moves on to 121 for 7 with that single. Fifth ball of the 16th over. Again, that angle bat. Almost non-striker. Vicky ஷாம் தான் ஸ்ட்ரைக்ல இருக்காரு. wanted to steal a single, but ஷாம் on strike, sir. do nothing there. That's a dot delivery there. But it's a very nice passage of play. You've got a wicket, you've got yourself comfortably, and not at a driver's seat as of now, until unless something crazy happens in this partnership. Last ball of the 16th over. It was Pattinson chipping down the wicket. The connection was really, really not good. It's in the air, and the catch has been laundered there at the long off. He was Pattinson is really, really angry. And he was in pretty much inside of grabbing his second wicket, only for that catch to be dropped there, almost at the same area where the previous wicket fell down. That should have been taken, I believe, because he was settling. For a moment, he really looked comfortable to pick up that wicket. There you go, Nivas Pattinson, really frustrated, looking at the fielder, showing his hand, and he said that was something that probably you should have taken, my friend. But nonetheless, he couldn't complete the formality of a catch. There you go, everyone hands on head, and I really cannot believe. And now Navin Raj has the ball in his hand. He has the display photo of MS Dhoni, the household name cricketer. At the moment, Crazy Crews need 42 of 24, make it 41 of 23, as the single has been taken off the very first ball of Navin Raj's first ball of his third over. Score on to 1, 2, 3 for 7. Second ball to Vicky Vignesh, fuller delivery, little slower, and giving room, wanting to get off the strike, but the ball will go all along the carpet towards the man at mid wicket. No run. He will remain on 1 not out of 4. Now each and every ball will almost will be like giving some room, playing that stroke. That is good. That is a dot delivery. For a moment, the Greenish thought that will be wide, so left the ball all alone, but that will be a dot towards the safe gloves of the wicket keeper. Look at the run rate. It has climbed on to 11.71 as they need 41 of 21. This is a slower delivery with one hand stroke. It's in the air, but you will find the gap also, as both the fielders running in from extra cover and long off will be there. The long off fielder grabs the ball, collects it cleanly, and will give it to the bowler as Navin Raj. Now Shyam on 6 not out of 8 will be facing up to him. This is fuller. This is much fuller, but he'll be playing it all along the carpet towards long on fielder for a single also. So the singles will not hurt Grandiose Cricket Club. They are stepping on for a momentum win here.
And until something crazy happens, I think again Crazy Cruise can be kept at bay. This is good. A very nice fuller block haul delivery, allowing absolutely no ஓ chance for the bat இல்லை அதெல்லாம் for the batter to use the long handle. 17 overs done and dusted. Crazy Cruise are 126 for 7, chasing a target of 164 versus Grandiose Cricket Club. तीन ओवर की गेंदबाजी अभी बाकी है। इसका मतलब 18 गेंद है और शमी पलानी आए हैं गेंद को हाथ में लेके, चमकाएंगे उस गेंद को। तो जरूरत है गेंद को चमकाने के लिए। शमी पलानी आए हैं, रूम बना के खेलने की जरूरत की थी विघ्नेश को, और ये चलते बनेंगे क्योंकि बॉल आ गए हैं अट्रैक्शन के साथ ट्यूम्बर को एक्सपर्ट डिस्टर्ब करने के अपडेट लिए। ये हो चुके हैं बोल्ड और शमी पलानी को मिल जाएगा अपना अपना तीसरा विकेट। 3 for 11 है अभी उनके नाम। और सही, बिल्कुल सही गेंदबाजी, थोड़ा सा हल्का शॉट रखा, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ऊपर किचन रखा, ஐட்டம் தான் और வந்துடுது. विकी विघ्नेश बिल्कुल रोटेट करके मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहते थे, और बॉल उनके बिल्कुल गेंद के नीचे होके उन्होंने उनको उनको चलता किया। 126 8 विकेट के नुकसान पे क्रेजी क्रूज। शमी पलानी ने दे दिया है तीसरा झटका ग्रैंडियोस क्रिकेट क्लब को। इस बार देखिए उसमें पेस अप था, लेकिन हल्के से शॉट भी था। कौशिक ऑफ द मार्क हो जाएंगे, लेकिन जो उन्होंने मिस किया है, தம்பியா देखिए अभी उनको चाहिए 37 और चाहिए யாருக்கு 16 தெரியும் गेंदों में। तो ये இப்போ நம்ம थोड़ा सा வேண்டியது मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि आप लोअर डाउन जो ऑर्डर के बैट्समैन उनको ब्लेम नहीं कर सकते। ये देखिए बिल्कुल सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में मारा, फील्डर आ चुके, फिर से उनके हाथ से निकल जाएगी ये गेंद। अगर उस हाथ में कुछ बटर लगा हुआ है ना, तो उसको प्लीज रफ करके आ जाइए, क्योंकि ये स्लॉग சார் ओवर चल रहा है, बहुत ஆமா ही ஆமா ऊपर से मारने वाले हैं। लेकिन ऐसे अगर कैच फ्लॉन्डर करते गए ना, तो वो फिर आपके लिए शायद मुश्किल हो सकता है कि ये कैच होनी चाहिए थी। ये तो आपको उसी जगह इसीलिए रखा कि आप कैच लो। ये देखिए फिर से ऊपर से मार दिया है, लेकिन इस बार एक दूसरे वाले ஸ்டே फील्डर ஸ்டே ஸ்டே अपने 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 कमल वाले हाथ से उनको ऐसे तो कमल खोल खींचते हैं उसी की तरह खोल दिया, और ஏடி बॉल डायरेक्ट जाके उसके कमल वाले हाथों के अंदर चली जाएगी। 9वां विकेट का हो गया पतन। क्रेजी क्रूज 128 9 विकेट के नुकसान पे, और शामी पलानी को मिल गया है अपना चौथा विकेट। 5वां विकेट भी मिल सकता है, क्योंकि एक विकेट बाकी है उनकी, 3 गेंदें और भी बाकी है, 2 गेंदें बाकी है। ஃபாஸ்ட்டாக வரலண்ணா ரொம்ப லேட்டு तो क्या शामी पलानी को मिलेगा अपना 5वां विकेट?
और अगर वो ले लेते हैं तो उनका नाम बिल्कुल वो 5 के लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि 2 बॉल बाकी है ये करने के लिए, और शेप अप हो चुके थे। बाल बचे बैट्समैन, और ये 500 विकेट होते होते रह गया, लेकिन उनके पास एक मौका और है, क्योंकि ये उनका होगा आखिरी गेंद अपने स्पेल का। क्या ये ब्लॉक होल पे बॉलिंग करेंगे? एक यॉर्कर अगर डाल देना तो मिल सकती है विकेट। ए हाँ गिर भी गए हैं, फुल टॉस बॉल को मारने के बाद वो गिर भी गए विकेट के बिल्कुल अपने वहां पे, ओवर ये हो रहा है भाई, बिल्कुल नियंत्रण में ही रख और पाए। भाई क्या पे 130 9 विकेट के नुकसान पे 18 ओवर के बाद। और शामी बलानी को 5 विकेट नहीं मिलेगा, लेकिन 4 ओवर के बाद शामी पलानी का बॉलिंग एनालिसिस कहेगा 4 विकेट और 15 रन। நான் 3 பால் சொல்லும் போதே அதான். நான் கேட்டா வச்சிருந்தேன். bowler. பீட்டர்சன் நான் போறேன். Last 2 overs. So Grandiose Cricket Club need just 1 wicket to win this match versus Crazy Cruise. There's a full toss. Will it be a run out the Kevin Strider Peterson. stumps? But no, they will complete the formalities as Raja Shekhar. In the last overs, last ball, he fell down while trying to complete that stroke. Was attempting to play that full toss towards the fine leg fence. He sports a jersey number 99, and Kevin Patterson now has the ball in his hand to complete his second over and to try and pick up the last wicket to hand a win for his team, Grandiose Cricket Club. So just 10 balls now remaining in this innings of the chase. Crazy Crews are not in a very comfortable position as of in pursuit of trying to win this contest. But 1 run will be now coming up. But these are not helping the cause, because look at the record run rate. They need 22 runs per over, and it will be almost safe to say now that it's the game for Grandiose Cricket Club, because they need 33 of 9, and it looks almost impossible now that they can do it. Kevin Peterson again will be bowling little short this time, and this will allow Raja Shekhar to open his arms and hit that ball all along the carpet towards the long on fielder for 1 run, and rotate the strike and give it to Sham, who's on 9, not on 12. The score on to 132 for 9. Little bit slowly bowled this time, waited for that ball to come, and has actually hit it all along the ground and across the fence for 4 runs. So this is a nice hit, not very crazily, not very firmly hit, but he nonetheless will get 4 runs to his name. Is Sham, and moves on to 13 of 13 and a score on 136 for 9. But still, they are in a very, very tough position, needing 24 per over to win this contest. 28 of 7. So can they hit 7 fours or 7 sixes and make this a deal? Nothing is impossible. And this is in the air this time. The ball has gone actually towards those far nice greeny patches. And Last and it has over. gone actually towards the boundary for 4, and that will bring also the end of the 19th over. 140 for 9. ஏ சாரி நவீன் இல்லப்பா, நிவாஸ்.
Crazy Crews are still alive in this contest. Can they hit 6 balls for 6 fours and take those 24 runs? No ball. I would No say ball. 4 fours. One is gone. It's a no ball. It's a no ball. The opportunity is still there here for Free to Crazy you, batsman. Crews to do something எல்லாம் no ball free impossible. to. But nothing but impossible word is found in the dictionary of the fools. So Crazy Crews are still there, hanging by a thread here. The first ball wanted to play it towards mid wicket, chipping down the wicket. It's a dot delivery. There's the inside edge of the bat of Raja Shekhar, almost again sliding and flipping to fall down. That he had made complete control of his stance. And now what can they do? Last 5 balls really need to hit all those 5 balls out of the park to do something crazy from Crazy Crews. That's volume. That's done Ball and வாங்கிக்கிறேன் dusted. The மணி. last nail in the coffin has been sealed, and that's the game set and match for Grandiose Cricket Club as they win this contest by 18 runs, I believe, or by 22 runs actually. And this is really nice inside edge onto the stumps. That's all done and dusted. As Samit Palani is probably the man of the match. 4 overs for 14, and and that's what it is. As for the batters of Crazy Crews are going back to the pavilion. They cannot do anything crazy today, but Grandiose Cricket Club, they will be very, very happy with this victory as they win this contest by 22 runs. And so don't go anywhere. We'll be back in action because we have 2 more matches to be played here today. We'll be back with the action of the second match very, very quickly. So stay tuned on this channel of the professional cricket competitions and ultimate cricket series. I'm your host commentator Mayur Barua. I'll be back with you guys with all the live action very, very shortly. Stay tuned. Thank you. பவுண்டரி. Not out, not out.
பால்